whether the product is good or bad. Jodi bhalo product, how this kind of low pricing can be afforded by the by the people or by the manufacturer. So pricing concept ame jota padhithilu, se pricing concept kothila kono na how to identify a good price for the product so that the people will buy. Now, what basic difference between that pricing and this retail pricing concept? Retail pricing concept. So when we're talking about retail pricing, how it was differ from that kind of pricing or normal marketing management pricing, how it is different? Of the goods and services to consumer by the retailer. Remember, by the retailer. It involves sometimes balancing the cost, sometimes the competition, sometimes it is based on depending upon the demand of the product, and sometimes basic profit objective को नेकी भी retailer तारा pricing टाको identify करे. जेमती कि अपन जदी किसी garment showroom देखिबे से माने निजरो tag लगांती. So जितने से निजरो tag लगाउछंती, so that the pricing was completely controlled by the retail shop. So if they want, they could able to hike some 10 or 15% price and then offer discount. And people normally, the customer thought of that ki, are the the sales, the retail showroom is giving much more benefit to me. No, they are taking benefit out of all kind of sales. Apano di babuchandi kebala apano benefited hochandi. ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସିଂ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଫାଇନ so they will definitely thought of that profit, then they will giving kind of an extra benefit to the customers. Sometimes they are seeing the competition and demand of the market, they will compromise with the cost and affixing a low price for the customers. So basically जब हमें pricing in marketing and pricing in retail भितर difference कहबा, एठी जो retailer रहुची, he will affix the price for the product but not in every way. जेमती कि आपण the branded products नेबे, so जोटी printed ऐसी जाउची manufacturer print करि दोची, सेठी retailer निजे pricing तको changes करि पारुनी और change करि पारुनी. He has to sell the product as for the whatever printed price. Now, what is the basic objective of pricing of in retailing system? Jodi apon basic objective koibe pricing ro, any objective, any pricing concept, the first objective is to maximize the profit. To earn maximum profit, that was the major objective of a pricing concept. Then try to increase the sales. That means you have to increase the sales volume. So accordingly, you have to identify the pricing concept. Then you have to thought of if it is a new product, then how to penetrate that product into market. If you affix a lower pricing concept, then it was possible to penetrate the product into the market. Then came survival. If the competition was very tough and your product is certainly losses is identity in the market, then you have to go for marginal cost. So marginal cost koile kono compromise with the benefit, survival, and you have to only thought of how to recover the manufacturing cost. Then customer satisfaction, it is also very essential that if the customer was very rigid regarding your pricing concept and all, then you have to compromise with the price and you have to make feel comfortable to the customer while they are buying the product and services in the market. Then brand positioning, establishing premium and budget image. So when we're talking about there is a brand like you thought of a big brand, something like Tanishq. So when you went to a Tanishq showroom, you'll find out a
large variety of product, but none of the product was so came along with the minimum, a gram. All the products are very precious, luxurious, and the weight of the product was high. Jadi upon a normal shop ku jibe, gold shop ku jibe, you could able to find out very minimum gram of product or minimum weight of product with cost also very minimum. But if you go to a Tanishq showroom, you will not find that kind of facilities. Now, what the theory is all about, it is a brand from Tata. It's quite a premium and established brand. So seeing this brand, there is no compromise in the price. And here a very premium kind of people also buying this kind of product. So there is no requirement of, making a certain kind of compromise in the pricing concept. So this is what the objective of the retail pricing. First one, pricing always based on the profit. If you cannot earn profit out of selling a product, then your particular, retail showroom is going to be a loss for it. So it was first and foremost thing that whatever you sell, you have to earn profit out of that. Then try to increase the sales or growth by identifying certain kind of discounts, offer, coupon, competition, segura karike apana sale badhebe. Then market penetration, how to make market penetration, it is only possible if you came along with a lower pricing concept. So if your product price was very minimum, then it is easy for you to enter to the market. Otherwise, it is too difficult. Then survival, maintaining business during the tough competition. Fine. So these are the objective of retail pricing. What are the basic factors that is affecting the pricing concept? There are two factors. Internal factor, let's say this first one is called internal factor. If you can see the mouse. So this is what internal factor, and a second one was external factor, this one. Now, what is internal factor? That consists of four different, factors. Cost of the goods, operating expenses, profit margin goals, store image and positioning. These four are internal factors, whereas competition, demand and supply, customer behavior, government policies, economic condition of any country, that was the external factor that affecting the retail pricing concept. Right? So came one by one to this. First, we'll talk about the internal factors. So the internal factors कौन? First है cost of the good. Cost of the good कहले हमें जो price रे good तक को purchase करजो. So for us it was the purchasing price. Fine. So cost of the good includes so many different kind of a cost. जैसे कि अपन करो all working capital cost, transportation, taxes and all. So while affixing a particular retail pricing concept or particular retail product price identify kurchu, so you have to think about how the people will react with the kind of a price. Jodi mo price टाको बहुत अधिका रखुचे, then how they will react. Jodi बहुत कम रखुचे, how they will react, and how it was comfortable for purchase or not. Then what is operating expenses? What do you understood by operating expenses? पिलाମାନେ ଯେ ସକାଳେ गिरधारी sir पढौଥିଲେ. So के कहबो? What is operating expenses? What is operating expenses पिलाମାନେ? Indirect expenses. Sorry? Variable expenses. Indirect expenses. Indirect expenses or variable? Yes. Madam, variable cost. Operating expenses. Variable cost. Variable cost ଯେତିକି utility or marketing plus. Okay, very good. So operating expenses, those expenses which can be controllable. These are short-term expenses and it can be controllable, like rent, salaries, utility. It can be controllable at a certain point. If you feel the rent was very high, you could able to change the shopping store, so the rent was minimum and somehow the operating expenses are being controlled. So ଯେତେବେଳେ ଆପଣ pricing fix କରୁଛନ୍ତି, operating expenses also puts a very huge role or having a very huge role while affixing the pricing concept for the product. Right? So ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି organization operating expenses ଅଛି, if you control that, then you could able to
find out with a good pricing concept for your product. Remember, pricing आपण काହାର करिवे आपणको retail showroom रे जो product टा बिकुचंदी तार pricing कथा भाबुचंदी. If you can control your operating expenses, then you affix or you can create a good pricing for the product which can be sold at your retail shops. Then profit margin goal. So profit margin mane kon if if you see there is a huge competition or there is a price war was going on, ताले आपण कोन करबे आपण profit रे आपणकर margin टाको either decrease करिवे or compromise करिवे to achieve a higher objective or higher goal. That higher objective or higher goal होला कोन to become at least sustain and survive during the high and tough competition or during the war of price war. Then go to store image and positioning. Also, it was plays a vital role while thinking about retail pricing of a product. Store image and store positioning, there be a huge amount of money is being implemented, and that was being collected from the selling price or MRP jaha apana affix koruchandi. Then came to external factors. Now, external factors, the first factor. So, in the external factor, the first factor is your competitions. So, those who are either selling the similar kind of a product that you are selling, or might be, substitute product what you are selling. They are the tough competitors for you. Now, when we're talking about external factor, this competition creates a huge, issue or challenges for in pricing concept. कौन पाई ना सेमान जेतले price टा को affix आपण करूचंदी आपण देखचंदी आपण को competition जे competitor जे तार product रो price कौन. So certainly you want to at least fix a price which is lower than your competitors. But सेतरे आपण कोन करचंदी ना pricing दे somehow competitors to slow down kariya pai somewhere you are compromising with the price. So that's why it was highly uncontrollable in nature. Demand and supply. If demand increase, then your price also increases. If demand decreases, sometimes you have to make a marginal price or you have to compromise with the price and all. Then you have to make a supply. If the demand was zero, then you are having a loss. Whether if you have keeping a huge amount of product at your retail store, so you have to face a huge loss. So the pricing is you have to affix a kind of a pricing. If the demand fall down, then you have to compromise with the product pricing concept, and you have to sell the product with a discount, a huge amount of discount, so that you could able to at least recover your manufacturing cost or normal cost through which you will buy the product from the manufacturer. Then consumers behavior. Some of us are like if I say the max people of us are really looking forward for the discounts, offers, coupons. ଯେମିତି କି ଆମେ credit card use କରୁଛୁ, then we will collect the coupons from the credit card. And then when Diwali or Dussehra was there, huge discounts are there for the products which are available in the online system. Then what we will do? We will buy the product with these coupons and what we have keeping with ourselves. So customer behavior is very weird. आपण कोनोसी भी customer behavior को at a straight you cannot analyze. So these are very weird people. Sometimes they are following the ethical issues and they follow loyalty about the product. Sometimes they will follow the proximity of the market. Sometimes they will follow when the market is volatile. When sometimes this consumers will follow the kind of enjoy the kind of huge discounts are offered by the brands and different shopping arenas. So while we're talking about affixing the pricing of the product, consumer behavior or customer behavior is always asking for a low pricing concept, so that it is affordable for them to buy the product. Now came to the next one, that was called government policies. Government
policy. Gitanjali? So, generally government policies changes in taxation format, changes in transportation cost, changes in various kind of change you can see. ଯେମିତି କି ଆପଣ ଏବେ ବି କଟକରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ massive ଯୋଉ road side outlets ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି. That was a massive ଗୋଟେ drive ଚାଲିଛି ଯୋଉଠି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି. So ଏମିତି କରିକି ନା ଆପଣଙ୍କର different government policies ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା this retail pricing or retail organizations or retail stores are being affected a lot. Then economic condition. If the economic condition of a country falling down or being very bad, then what do you expect? If the economic condition was very bad and the recession was there, then definitely people do not have money to buy the product from the market. Fine. If you go to something like a very poor country, like if I'm giving an example, then that was some of the African countries were very poor. Means their income, their country's financial position was very low. If you go to that particular place, you could be able to find out that the product price are very high. And the people are having such kind of condition where they could not identify and they could not able to buy the general utility product, food products from the market due to high price. जदि आपनकर इन्फ्लेशन हेला रिसेशन हे गला दीटा जिंस होची एक तो लोकंग पाखे लोकंकर परचेसिंग एबिलिटी टा somehow it was compromised. Purchasing ability टा compromised हेजबो compromise हेकिना purchasing ability टा कमी जबो. If the purchasing ability will decrease, then ultimately it will affect the manufacturation and manufacturation भी कमी जबो. So if there is no demand, then why should make a huge amount of manufacturation? Very simple theory. And other product price ପଡିଯିବ ଲୋକଙ୍କର buying capacity or purchasing parity was decreased, and certainly people will face a kind of a recession where with a minimum amount of money they will not able to buy anything from the market. Fine. So ସେଠି ଆପଣ pricing concept କଣ ରଖିବେ? In this particular situation, you have to, make your product available for the market with a low pricing concept. Here, the profit was very marginal. Both com profit upon. Then what are the methods of retail pricing? There are basically three methods that is being adopted for the retail pricing. First one is cost-oriented pricing, that was called cost plus pricing concept or cost plus markup pricing concept. Second one is called demand oriented pricing, which is based on if the people wants to buy, then only the price was being high and they will affordable for the people. If demand अधिका होची price भी बढ़ा होची. जेमती के एबे आपण near past रे देखिदिबे जेतले इंडिया रे LPG problem आसला. That means what? Hatachi government was giving one instruction that you cannot buy a second cylinder within 25 days span of period. That means once the span of period was over for 25 days, then you can buy. Thought of a family where family number of people are 10 or 15, and they normally ordered a cylinder within 15 days or 12 days. Now they have to wait for more 10 days. And basically you cannot reduce it now. So you cannot reduce eating. So you consuming the same kind of LPG. Sarkar jitale ida announce kardele, hatat ki lokomane bhabile ki what is the next option for them? What is the next vikalpa for them? And they will thought of this induction cookware and induction stove. And achanak dekhibe apana pray sabu online system re induction cookware and induction stove rate around 50%, 30% increase ayala. And in some particular site, there is no availability of this, instruments. So that is what, if the demand increases, what happened? Sometimes the price was very high
It was unable to buy, and sometimes people are making black marketing, and they will retain the product with themselves by showing the product was not available. And then when the price increase a lot, then they will sell the product with a higher price. Now came to the third one, that was called competition-oriented pricing concept. Now, what is competition-oriented pricing concept? That is based on competition price or competitor's price and common in supermarket. Fine. So, what is competitor's price? Actually, upon a supermarket rate, if I'm talking about spices, haldi powder, similar, there is a Ruchi, then Bharat, then one more, company, then one more company. And when there is a, the customer was visiting to the particular place, he has 4 or 5 or 6 or 7 options. Now, the customer wants to choose what is perfect for himself or herself, suitable according to price, according to the quantity, according to the brand. So, customer pine, there is n number of options. Here, brand pine concern, they will buy through brand. Here, quantity pine concern, they will buy through quantity. Some are concerned with the product features and added attraction like offer, coupons and all. So they will buy it like that. So if you say there is a certainty that ki gotte particular point re hame customer ko bandi hi rakhiba, it was not possible. But as pricing concept, you have to think about how to beat my competitor through making a very good and very unique pricing concept for my product. So in supermarket, both easily you can verify, you can identify, you can make a complete, understanding. Then what is retail pricing strategy? So there are 7 different strategies that. That cost plus markup pricing. Again, Markup price, okay. So when we're talking about this based on cost plus markup price, so markup price means what? Basing on certain kind of, price war, you have to increase the pricing concept. Particular product, when you think about to sell it, sorry, to buy it, a particular product to so what is the option for you? Particular product, what are the option for you? You could visit the retail shop and thought of what to buy, what not to buy. Got it? Now, yes. Yesterday you go and saw the product price is this much. And again, the next day when you go, you see the product price increased by 10 or 20%. Now, why that product price is increased? Because of the might be demand or unavailability of the product. So markup pricing, markup pricing concept, that was based on various things. If the product was unavailable, sometimes markup pricing be boost for a black marketing. Fine. Or sometimes because of the high demand, Price means MRP. market price be body jauchi. So markup pricing normally, the basic idea is what is the cost of the product and what business will pay or to produce a particular product. Then what is markup? Extra amount is being added for the profit to make your, your organization more profitable. Then you have to make cost plus markup. Markup is might be 20%, 10%, 30%. It was not exactly the manufacturer cost. Manufacturer cost is what exactly the business pays to make manufacturing that product. What a product to what a organization, what a manufacturing organization, that was the cost of the product. Yes, yes. Markup money profit. Extra Yes. profit. Extra profit. Which is added to make the retail organization more profitable. So that was called cost plus markup. So markup ta apanakar kichi be ipare. Markup ta apanakar 10% ipare, 20% ipare, 30% ipare, 40% ipare, according to your understanding, according to what you want to sell. According to competition also, जदि आपण बहुत अधिक markup रखिले माने निचो पई के अधिक benefit रखिले and आपण competitors कम रखिले ताले आपण को लोक product किनिबेनी. So markup pricing also based on, competition, demand,
variabilities of the market, requirement of the people, regarding the product and services, demand of the product. So ये सब ऊपर markup टा रहुची. बुझिପାରିଲେ? मैडम डायनामिक प्राइसिंग कौन डायनामिक प्राइसिंग Dynamic pricing द्वारा मैं भी संगे संगे अपन को कहली dynamism कौन माने change. आमी कहूछु technology is a having dynamism, high dynamism. So dynamic pricing just this way. sorry डायनामिक प्राइसिंग रो मेथोडोलॉजी कौन किसी पर्टिकुलर रूल अछि रूल बेस्ड प्राइसिंग हुए ना डायनामिक डायनामिक प्राइसिंग Dynamic means demand based price. According to different change. सुनंदो प्राइसिंग रो एमती कोनोसी वर्ड नाही डायनामिक प्राइसिंग बेली किछि नाही आमे जति के पढुछु हां आमे कहबो प्राइसिंग इज बिकम डायनामिक व्हेन डिमांड फ्लक्चुएट आज बहुत हाई डिमांड अछि काली डिमांड नाही तापर हठात कि आपन का डिमांड इंक्रीज कर जाउ छी तापर डिमांड नाही so that means what you have to certainly settle yourself with this kind of a variation of demand or else you can say that if you find out product is absolute ता माने कोन प्रोडक्ट ता टोटली तार आइडेंटिटी लॉस करूची मार्केट रे लोक किनु नंदी से तार आइडेंटिटी लॉस करूची सेति भी आपण डायनामिज्म यूज करिवे ता माने कोन आपण sometimes you have to give a huge discount on the price and you will sell the product. So dynamic pricing एमती किछि concept नहीं but dynamism हमें सबु बेले मार्केट रे देखो से जो वेरिएशन जो चेंज इन प्राइसिंग concept हमें प्राय मार्केट रे देखो न एटा कोठी होची नॉर्मली when we are talking about general stores mom and pop stores kirana stores एटी होची आपण जदी नॉर्मली जिबे भरी branded store को you cannot find out this kind of dynamism at a very rapid way. You can find but you can't find in a rapid way. But I mean जेमति कि नै जानतु आपण गोटे Volkswagen रो कार शोरूम को गले या तो फिर आपण गोटे नॉर्मली कार शोरूम को गले सेति प्राइस रो डायनामिज्म एते नाही जदि तदरे वेरिएशन बहुत रहिबो डायनामिक माने बुझि पछन आज प्राइस अधिका काली कम परदिन अधिका तापर कम so people will never buy जेते आपण लग्जरियस और सेमी लग्जरियस प्रोडक्ट आसले बट सेठी आपण जानतो गोटे फ्रूट्स मार्केट को काली आपण अ डजन ऑफ बनाना आनिचनी 60 रुपीस रे आज 80 रुपीस अछि सो लोक कहछि कोन करिया बनाना आसीनी मार्केट को गाडी आसीनी सेति पेंगी प्राइस बढ़ी होला आपण किनिया को बाध्य काली आपण ग्रेप्स किनुछन 150 रुपीस आज 170 रुपीस रे किनुछन पुनी काली जेते हठात की जाउछंदी शिवरात्रि अछि सो सब जक फ्रूट्स प्राइस बढ़ी जाइछि 10-15 रुपीस रे सबतरे बढ़ी जाइछि आपण बाध्य किनिया को बिकॉज़ यू आर देयर यू विल ईट फ्रूट इन दिस शिवरात्रि बस तार 2 दिन परे आपण जले मार्केट जाउछन पुनी एवरेज प्राइस मिलछि सो दिस डायनामिज्म और डायनामिक प्राइसिंग कांसेप्ट आपण सबले लोअर ग्रेड रे देखिबे ओपन मार्केट रे देखिबे मॉम एंड पॉप स्टोर रे देखिबे किंतु जदि आपण नॉर्मली कहउछन ब्रांडेड एंड लग्जरी एंड सेमी लग्जरियस प्रोडक्ट एटी आपण एते ह्यूज फ्लक्चुएशंस देखिबनी पेन एबे बुझि परले गोटे मैडम कंफ्यूजन अछि लास्ट 5 वर्ष होला ट्रेंड होछि हमर जते ऑनलाइन एबे तो प्राय 5-7 वर्ष होला ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन रिटेल बहुत ग्रो करछि लास्ट 4-5 वर्ष होला आईफोन नो सेल्स बिग बिलियन डे रे बहुत होची नॉर्मल डे अपेक्षा आ बिसी समय से माने डायनामिक प्राइसिंग ही पकोउचंती जोटा कि आपण राती 12 बेलू किनिबे जति कि घंटे परे बढ़ी जो रेट that is only for a particular date and that was not dynamism that is kind of a way to sell the product ame jetale कहनु कि बिग बिलियन सेल जेमति कहउचंदी Amazon रे सुची मिंत्रा रे संति सेल आछी राती 12 टाइम जति आपण किनिबे अब पर्टिकुलर मोबाइल फोन स्पेसिफिकली जेतला आछी आपण सेटा कम प्राइस पे पाइबे but you cannot find out a huge variety for that it is the last product of that particular that particular series and they will offer in राती 12 टारे आपण एटा किरंतु सेमति आपण मार्केट रे पाउ नंदी कि ऑफर रे प्रोडक्ट्स ओपन मार्केट रे भी पाउचंदी आपण सिंगल देखे गोटे गोटे बड़ मेगा मार्ट को पळेबे जोटी सिंगल प्रोडक्ट हेची सेटा डिस्काउंट रे पड़थिबो
So these are occasional. This is not dynamic, representation of the pricing. Dynamic कहले जोटा कि बहुत fluctuative. These are not very fluctuative. These are occasional. Occasionally, these pricing offers are there. जेमती कि अपन जदि गोटे particular sky scanner गोटे website अच्छी जदि अपन तादरे Tuesday दिन कोनोसी flight book करिवे sky scanner रे अपन minimum तादरे अपन 2 to 3,000 rupees रो या तो फिर 1,500 रो discount पाइजे only Tuesday. madam ठीक Got करा it? कहले आपण I agree with that. Madam So that pricing was the, this is called a kind of a strategy to sell the product. So आपण जदि Tuesday भी गोटे particular time रे न login करछंती ताले भी आपण पाउ नहांती. So this is the strategy to make endorse your your product, your services, your website. जेमती आपण जदि ट्रेन रे जाउछंती यात्रा रे बुक करछंती 200 टंका कम देखौची. So that is not dynamic pricing. It is kind of सेई जो ऑर्गेनाइजेशन yatra.com से कौन करूची ना टिकेट रो वैल्यू को ता तरफ रो 200 रुपीस डिस्काउंट दोची टू अट्रैक्ट द पीपल एंड से ता भितरे केतोले आपण मोटो प्रॉफिट भी अर्न करि नउची. गॉट इट? ठीक अछि मैम. Okay. आ गोटे हमर किछि साइकोलॉजी सहित प्राइसिंग रो किछि बुक्स अछि कि जेमति कि हमें गोटे जिनस को प्राइस की हमें डायनामिकली कि केमती बढ़ाई परिबा जो थरे कि कस्टमर से प्रोडक्ट और सर्विसेज को और किनिबो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है. Pricing, retail pricing strategy. If you see, the third was called psychological pricing. Fine. So, what is exactly the psychological pricing? That is, when we are talking about customers, marketing there are different type of customers we have. Generally, benefit-based customers, loyal customers, benefit-based, loyal customers, education, customers based on education, and category customer. So you cannot say, well, let's talk about Mr. X. Mr. X is only loyal customer. No, it was not possible. Psychologically, when Mr. X have huge amount of money, then he might be a loyal customer. नहीं जानते वर्षे पर मिस्टर एक्स पाखरे एते पैसा नहीं बट ताको जिंसो किनिबार अछि से कोन करबो बेनिफिट बेस्ड कस्टमर हो. सो साइकोलॉजिकली और वेरी आइडियोलॉजिकली ही थॉट ऑफ कि हाउ टू बाय द प्रोडक्ट so I could able to earn profit out of that, some discount out of that, some extra benefit out of that. बुझि पाउछन. So psychological pricing किछि नता है, psychological behavior थाए. Human behavior when we try to buy something. जिते भी धनी लोकटे हिताउ देखिबे आसी भाबुथिबो मनरे कि if I buy a luxurious car which is over the rupees of 50 lakhs, so what else I can get from that? What else might be not discount but services, a kind of a service, a kind of a something like display, kind of a if I buy the most luxurious car in India, then it should be came in paper. Got it? So might be that was not exactly or directly I'm asking for the liberty in price, but I will ideologically I will thought of something which is related to my superiority, and for that the organization has to spend some money. बुझियोछि एटा में कोछ लग्जरियस जदि आपण कहउछन बट जेमि हमें इन जनरल जदि गोटे रैशनल पर्सन को देखुछु ओबीरो जेमि रैशनल मैन की ना जा पाखरे सबु प्रकार प्रॉब्लम इश्यूज चैलेंजेस ता लाइफ अछि एंड तथापि से गोटे नॉर्मल लाइफ बन. Now if you see the rational man sometimes loyal, sometimes benefit based, sometimes asks for discount coupon and everything, sometimes very loyal to the quantity and quality. So you cannot identify the person at one particular spotlight. Got it? So basing on them, you have to identify the pricing concept. So I'm coming to this retail pricing strategy. There are 7 different pricing strategy we have.
That was first one is everyday low pricing, EDLP. High low pricing, जोटा आपण dynamic एबे संगे संगे में discussion करूथुलु. Psychological pricing, that was based on the behavior of the individual customers and consumers. Discount pricing, loss and leader pricing, bundle pricing and dynamic pricing. आसिले बुझिबा गोटे पर गोटे. Sorry, এটা কোন internal factors ଆସିଗଲା. Okay. So everyday low pricing, EDLP. So what do you understood by everyday? That means constantly it a low pricing को hit करूची. So जेमति कि big retail chains जो माने रहिबे से माने low pricing concept को दउचंती. It is only to build the customer trust towards themselves. Then high low pricing, high regular prices with frequent discounts. जेमति आपण if you go to any departmental stores or all, you can find out the high regular prices, but with a frequent discount. 1+1 offer, 50% off, 20% added. So that was common in retail fashion because we all thought of, getting something more with the same price. Then came psychological pricing. एठी देखंतु जेमति गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल हैला कोन प्राइस इज 99 instead of 100, but can that 100 आपण जति 100 टंका दे दोछन कोन से टंकाटा आपण फेरोची प्राय टाइम कहूची जे मो पारे टंकाटा नै तापर गोटे चॉकलेट दे दे पारे but टंकाटा नै, but that feelings थाए 599 but it was not 600, 499 it was not 500. This is also kind of a psychological pricing concept. So it was creating a perception for the customer towards the product, saying that it is lower in the cost. Then discount pricing, where seasonal sales, clearance sales, which attract the people for the, to buy. So that was called price sensitivity of for the customers. Loss leader pricing concept है लाकोना, जो कि selling is more product at a low price to attract the customer. जोटे में bundle of products किसी कम price रे पाई जाउछु, bundles of dozens of products and all. So in that way you could able to sell a huge amount of product and attract the customer. Then also bundle pricing, where single and multiple products together at a lower combined cost and price रे मिलुछि. जेंति कि आपण निजंतु mosquito refilling that coil and that particular refill. When it was combinedly came along with a minimum price. Then dynamic pricing, what we already being discussed, that was changed with demand, time, customer behavior, etc., etc., etc. Then came to pricing techniques used in retail. Pilamane 2 minute break nebi. So I will came back, then we will discuss this.
We pilamane, am I audible? Am I audible, pilamane? Yes, madam. Yes. Yes, sir. Okay. So we'll move on to pricing techniques used in retail. There are 4 pricing techniques. One is markup pricing, then markdown pricing, break-even pricing, and odd pricing system. All are being discussed one by one. Khali bujhi daba. When we're talking about markup and margin, fine. Markup kona, that we already understood. Whatever the selling price minus cost. That means whatever your benefit. That is being divided with the cost divided by 100. So that was called markup. Normally, markup was being decided in this. Margin kona, na selling price minus cost divided by selling price into 100. Tamane kona, ethi apanka recover hochi cost, ethi apanka recover hochi, sorry, ethi apanka recover hochi selling price, ethi apanka recover hochi cost. Got it? That means what? When we're talking about margin, margin always came along with the when price was falling down. Markup when price was high. So you can say that markup and markdown also. So markdown kettele hoba jetale product demand was falling down and it was not supposed to be, have a sellable in the market. That means the people will deny to buy. In that time period, you thought of how to recover the cost only. But when we're talking about markup pricing, selling price identify karibe and high price re bikibe to at least high mark high markup and markdown. Then we have break-even pricing, covering the total cost without profit and loss. That situation kon? What is the situation according to you? Break even, Yes, madam. anyone? Yes. No loss, no profit. No loss, no profit. But when it was a situation came when the pricing concept fall under which situation? Whose situation ko normally we will talk about this break-even pricing. That means neither we will ask for the profit nor we will ask for the loss. It's not equal to total selling price. Yes, it was only selling price, and which possibly if the competition was very high, that actually I want to listen from all of you. When the competition was very high and you have to retain your customer with it. So you cannot openly open the customer so they will go away. So you have to retain the customer for a longer time period. You can say that it is for the sustainability of the product, right? So in that time period, neither you ask for the profit, nor you ask for the loss. You have to retain with a certain kind of pricing concept where you only recover the selling price, right? Yes, anyone? Yes. Then odd pricing concept, it was based on the behavior, yes? New product launching in the market, that was also break-even pricing concept may be used. No. When it is new product development, penetrating into the market already been discussed. That is penetrating in the market, right. new product or new services. That is low pricing concept. That was not break even. That was low pricing concept. So in that way, you can have profit for yourself, but amongst the customers, amongst the competitors, you have to fix a price which is lower from your competitors, so that when there is a new, there is a person came, he at least feel attracted towards a new product, because you are competing with the product, either they already exist in the market or like a branded product. So branded sangare apan kemti fight karibe, because he was already have a huge place in the market. So seti apan price rate ke compromise kar douchandi. But that was not exactly break even. That was compromising with the price and entering to the market with a minimum pricing concept. Yes. Okay, what are the advantages of the retail pricing? That was increased profitability, enhances customer satisfaction, improve competitiveness, and help inventory management. These are the advantages, and let's talk about what are the challenges of retail pricing.
So retail pricing, ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ 140 crore and above population, and as everyone have a different kind of a perception towards the market, and every customer is completely volatile and dynamic in nature, so you could able to find out a very intense competition in terms of price, in terms of product, in terms of services. Then the second one is price sensitivity of the customers. Price sensitivity कहले price बढ़ुची कमुची, for the customer it was quite very hectic to see and to obey this. It was quite very hectic. Then fluctuating price, total price sensitivity and fluctuating price. So price रे एते fluctuation हेले customer पे सबु बड़े इटा गोटे negative impact create करे for the customers. Then online pricing comparison आमे सबु बड़े करूचु. So if I buy this in offline, this mobile phone, and I will buy this online, what should be the marginal difference on price? If I find out in online price is less, I will buy. If I find out in offline the price is less, I will buy. So that based on the comparison. So normally देखिबे आजिकली समस्ते आपण जदी आपण ऑफलाइन स्टोर को भी जाउचंदी गोटे किनिया पैंगी से भी कहूची आज्ञा आपण ऑनलाइन रे देखि दियंतु प्राइस एतिक अछि मो सेतिक रे आपण को बिकुचे. So that means they are also being very very aggressive towards this, and government regulations are there that is also challenging them. Taxation formatary changes hochi and all, that is also very challenging in nature. Then concluding this particular retail pricing is a crucial decision making process in retail management, and successful pricing strategy can balance the profitability and customer value, which can ensuring the more and sustainable business for the retail stores. बुझियला पिला माने एतिके retail pricing. In the next class we will go to retail promotion mix. Okay, next madam आसिया पर्यंत टिके wait कर जानतो, because I will not continue today for longer time, because it's heavily rain is going on and I have to go Cuttack from Bhubaneswar. So मु जणो का को host कर देबी. का को host करी पिला माने. Yes, का को host करिबी. गुड इवनिंग मैम, मते कर दियंतु. अच्छा, अपराजिता मु तुमको पोस्ट कर दउची, बट मु आ रास्ता रे ठिया ही परबिनी मैडम को ये करे पे किछ होस्ट करिया दरकार नहीं. मैडम को सेमती हाँ चलिबो. सो ओके. आप तमे रहिबो तो पूरा कट हाँ करबनी हाँ तो. हाँ हाँ रहिबी. ओके, थैंक यू पिला माने, बाय बाय. ओके, Thank you, tomorrow we madam. will go along Thank you, with the ma'am. next one. Okay, bye bye, bye bye. थैंक यू. Have a safe journey. ଏବେ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି କି? Hello students, good evening. ପିଲାମାନେ
Hello, students. Good Good evening, evening, students. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening to all of you. Good Evening, evening, madam. dear. Good evening. Class सरी गलानी आमे इना start करिबा पिला माने आ पूर्व क्लास सर जाईची आमे start करिबा की Yes, madam. Yes. अच्छा Yes, ma'am. Good evening. okay so wait a moment. Dear students, yesterday what we have discussed many things related to man-made disasters. Apart from we have also completed what do you mean by fire and what are the different kinds of fire, right? कितने प्रकार fire generally हुए and basically it leads to building, coal as well as कोठी कोठी हमें fire टा generally देखिबा को मिले building रे, coal area रे and हमारो chemical fire, building fire, coal fire and chemical fire, right? So ये जो variety types of fire हुए, so generally what is the causes and what are the different classified in different category, variety kind of fire extinguishers are there. So basing on this, we have to sort out the problem of that and what are the causes of the fire, what are the effects of the fire and how to manage the fire. ये सब already हमें कल discussion करी सारिची, हैला? causes है generally हमें कौन ना it may be causes है दुई प्रकार, it may be the human error, human cause or it may be the natural cause. Natural cause है माने it may be the lightning, due to घर एसी लगी चे lightning है एसी बंद करिने building रे fire हेई परिबो, तो आसिके डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हेकी फायर हेई परिबो बट जदी माने थ्रू लाइटनिंग हेई परिबो, राइट? आमर भी भूल रही पारे जोटा कि आमर ये पाई एरर पाई कहि कि ह्यूमन एरर पाई मध्ये हबो जोटा कि डेली रो बिल्डिंग फायर हैला तो हमें कहिबा जनरली जदी हमें सेटा प्रिकॉशन नहीं पारि थांते ताहले से प्रॉब्लम हेई न थांता नो बहुत प्रकार प्रिकॉशन नहीं परियो जेतला हम एसी ऑपरेट करूचे so we have to basically up to date things we have to adapt in our day to day life related to fire जोटा कि हमको जानिबा दरकार घरे फायर एक्सटिंग्विशर थिबो बट हमें ताको यूज करबा जान नथिबा सेटा ला कंप्लीटली यूजलेस, राइट? एसी को पूरा दिन सारा लगै थिबा 10 घंटा पर्यंत एसी लागि से तार प्रेशर केते नबो अल्टीमेटली ब्रेस्ट करिवो जोटा कि दिल्ली रो हेला ब्रेस्ट कला और पोर वायरिंग कंडीशन थिबो और कौन हेतिबो ना हमर टाइम टू टाइम हमें सर्विसिंग कर नथुबा अपडेट ये करू नथुबा सो बहुत कारण रहउची घरे फायर होबार इट मे बी द रिलेटेड टू electrical related fire or it may be AC related or freeze related whatever may be the things is there the short circuit or it may be some kind of burst will be there in the inside the building or infrastructure, right? So it ultimately lightning तो हला separate सेटला भी हमको निजो को केयर करियो पड़िबो जोटा कि हमर अर्थिंग सिस्टम टा पूरा स्ट्रांग रखबा लाइटनिंग हबनी लाइटनिंग आसले भी हमको अफेक्ट करिवनी जदि हम घर अर्थिंग सिस्टम रखिबानी ताहल तो ऑब्वियसली लाइटनिंग हमको अफेक्ट करिवो ना जते लाइटनिंग अफेक्ट करिवो स्ट्रांग अर्थिंग सिस्टम रखो देखिबा केमति लाइटनिंग अफेक्ट करिवो करिबानी ताहले कोन हबो तो हमर जनरली कोन हबो लाइटनिंग अफेक्ट करिवो लाइटनिंग अफेक्ट कले कोन हबो अल्टीमेटली जोटा कि सब किछि डिस्ट्रॉय कर देबो घर नेचुरल कॉज बट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन जेतला हम हमर अर्थिंग सिस्टम थाई कि मध्ये जेतला लाइटनिंग होचे हम टीवी कोन कहले फ्रीज एसी सब किछि बंद कर दोचे so we have to take some precaution, right? इलेक्ट्रिसिटी तो से मनु कट जदी इलेक्ट्रिक कट नकला पावर कट न होला सेई टाइम रे सो इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, राइट? तो ये सब हमको टाइम टू टाइम मॉनिटर basically training is also essential, awareness is also highly essential. ए सब किछि हमर रहिबा दरकार जोटा कि somehow we can manage such kind of destruction, such kind of panic situation and we can overcome this also. हमें इथरो ओवरकम करि परिबा एंड हमें एई सिचुएशन को जनरली हमें कंट्रोल भी करि परिबा तो ए सब टिके केयरफुली ध्यान रे मन रखिबे ठीक ना पिला माने यस ना गैस हला
गैस फायर हैला से मोमेंट रे जनरली कोन एमती तो होई जीव ना लीकेज करिवो गैस टा लीक कला जेते स्मेल टा हबो सेते बेले तो हम स्टेप नबा ना आ ताको हम स्टेप नबानी यहाँ लीक तो होउची आ से जो हमर भोपाल ट्रेजेडी टाइप रो बताले केमती हबो so we have to take the सबुथिरे only sign दिए and we have to take the precaution we have to take the earlier step so that we can no avoid a great damage biggest damage ठीक ना पिला माने yes ना students Yes, madam. हैला आपको टिके ध्यान रखिबे सब तो चलंतु एना म आपनकर पढेबी फायर रिलेटेड एसो मन रखिबे हैला कॉजेस कोन कॉजेस दीटा को लिखिबे नेचुरल कॉज ह्यूमन कॉज ह्यूमन कॉज नेचुरल कॉज दीटा को इति लिखिबे इफेक्ट्स हला आपण जानि चंती कोन ए जो वैरायटी टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड फायर ताको लिखिबे हैला आ इफेक्ट्स कोन अल्टीमेटली द इकोनॉमिक impact means it is not only problem faced by the human being and the society but also it leads to polluted the water the environment suppose amaro ye fire hela kon coal fire hela so it not only means affect by the human being but also it polluted by the environment the entire ecosystem ko destruction करे right soil air water e सब को polluted करे ए सब लिखिबे तर solution management कोन ए सब हला रेगुलर इंस्पेक्शन रहिबो मेंटेनेंस रहिबो जोटा कि आमे कोन करिबा ट्रेनिंग दबा अवेयरनेस क्रिएट करिबा हमरो टाइम टू टाइम अप टू डेट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिबा ए सब एसओपी गवर्नमेंट गाइडलाइन को अडॉप्ट करिबा स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर ए सब को जदी आमे करिबा then we have to maintain safe things no we can maintain in our or home as well as the other place हैला तो चलंतु today we will discuss one chapter that is what a chapter related आपको देखिबे आर रिलेटेड मु गोटे आ गोटे चैप्टर पढेबी हैला जेटा कि it is there in your syllabus what now first we will discuss climate change and based on the climate change we will discuss कौन डिस्कशन करिबा ना climate change को नै कि मु आपन को पढेबी heat wave and cold wave right तो देखंतु climate change कौन what do you mean by climate change generally we can say it is a long term shift in temperature and weather pattern in a particular area which is put adverse effect long term पर्यंत generally if in a particular area in a particular no region long term adverse effect will be there in that particular area then we can call as a climate change होची it may be the adverse effect may be hot or the adverse it may be cold or adverse effect it may be rainy jaha bhi ho so ultimately in basically in today's environment no climate change generally we can say due to the greenhouse gas emission in the atmosphere greenhouse gas emitted continuously and it basically due to the human activity already we have discussed and it not only threat towards the society and the basically we can say the universe but also it a threat for the plant life also right so this is the basically we can say it at the last 50 years पूर्वरु नथिला जदि हमें कहिबा last 50 years रे तो हमर कोन थिला ना हमर ग्रीन एनवायरनमेंट थिला जेमति कि हमें कहिबा आइस एज थिला बट ए जो 50 years भितरे जो हमर क्लाइमेट रे चेंज आसी ची नो and it is the we can say you know it is a greatest problem and greatest challenge of the for the 21st century in this particular means in particular time no it is a greatest challenge for the 21st century no in the global community we can say so generally we can say no जदि आमे आपको भलो से मेंटेन न करिबा द adverse effect this kind of climate change no it may be heat wave or it may be cold wave severe heat wave severe cold wave severe kind of rain to take it leads to flood cyclone kind of things happening in our day to day life severe heat wave it leads to drought ये जो situation को जदि it is the basically we have a moral responsibility no towards the society towards our next generation so that our moral responsibility kon
ना जिते आमे सब गाइडलाइन पढ़ी के आसिले if all society as a whole we will take such kind of steps so that we can survive the environment, it can be survived, and the next generation jo amar asibe, jo amar next generation aschanti, so they can live their life happily based on the safe and clean environment, green environment, clean environment, safe environment. ए हिसाब रे समाने कोन करिवे ना सस्टेन करि परिबे जदि हमें एनाटू प्रिकॉशन नबानी एंड वी विल नॉट टेक दिस स्टेप्स सो व्हाट विल हैपन धीरे धीरे कोन कहले हम 2050 बळकु आ 25 वर्ष बळकु कोन हबो ना मोस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द नो our universe ro most of the country बहुत सारा माने सिचुएशन देखि राइट हमें कोन करबा सो आर कॉजेस कोन देखंत कॉजेस एंड इफेक्ट्स आपनकर एठी थवाइज कॉजेस कोन already we have discussed many causes related to climate related to no this kind of disaster causes of climate change kono already at the time of air pollution at the time of different types of pollution at the time of global warming no say time already discussion kariche causes of adverse situation it leads to society and the environment but in the climate change generally the causes of the climate change due to rapid industrialization already we know that due to the industrialization because through these variety kind of toxic things emitted towards the environment and it leads to environment polluted due to the deforestation causes like deforestation cutting of unlimited trees due to the fire I already discussion करले ଗୋଟେ chapter fire it may be the coal fire it may be the what ame कहबा forest fire or forest fire madhya gote environment को high level रे polluted करची it may be the forest fire it may be the coal fire it may be the what chemical fire jaha bhi fire होची हो so एटा मध्य हमरो कोन करची ना ultimately it affect the environment and it leads to affect the climate जोटा कि हम climate को पूरा destroy कर दोची and also we have discussed जोटा कि हमें pollution रे discussion करथिले global warming रे discussion करथिले high vehicle emissions जोटा कि it leads to it emitted the no carbon dioxide towards the environment जो थिरे कि बहु परिमाण रे it is highly dangerous towards the environment and the ecosystem of the and the society as a whole excessive use of fertilizer at the time of agriculture system no farmer use fertilizers so सेठी कोन होची जोटा कि ultimately एटा काहा को affect करूची it affect the water air as well as the soil right तो एटा कोन करची पूरा ग्रीन हाउस को affect करूची heavy construction आमे already पढ़ीचे construction जोटा कि केमते air को polluted करे due to the mining activity पूरा mining पूरा खोली कि से entire area रे आउ माने लोक रहिबा भी देखिबे बहुत सारा एई ना गोटे देखोतला टीवी रे से माइनिंग एक्टिविटी पे से एंटायर एरिया रे लोक मानकर जो घर अछि से सब डैमेज हे गलान एते परिमाण रे थरुची से घर सब एमान तेतले ताको हाई लेवल रो माने ये ताको खोलुचंती राइट due to the frequent atomic experiment or it may be the increase of plastic garbage government modi adopt kale clean india no free plastic free india and clean india but आमे ताको मानु जे कि सेटा गांधी जी कर भी ये नहीं कि आसिला कि आमे गांधी जयंती दिन आमे एटा शपथ नबा कि आमे क्लीन इंडिया करबा एंड गार्बेज फ्री इंडिया एंड प्लास्टिक फ्री इंडिया बट स्टिल वी आर यूजिंग दैट जेटा कि आमे ही एवर होने मु निजे भी जीबी दुकान को ताको कहबी भाई आलू की प्याज देलो से कहबो बैगन चंदी ना हां देई परिबिने ना थाउ तमरो तो से माने भी कोन करिवे से माने भी बिजनेस करिवे यदि समस्त पळे आसीबे ताल से माने काहा को बिकिबे राइट सो से अनुसार से माने को करजति बाध्य होचंती प्लास्टिक रखिबा पे आमे मध्ये एवे नुह आमे मध्ये बैग नेक जाउन हमर हैबिट हे जेची छुआ बेलु जे हां दुकानी वाला त हमकु दबो गले जदी पॉलिथिन हां इंदी केतरा दुकान सब दुकान आमे एमती फरिकी पळे आसीबा त दुकान तर बिजनेस करिवो ना नै सो एटा होची कहार सब भूल कहार कहलो सब भूल हला हम मानकर आज ए ह्यूमन बीइंग आज ए सोसाइटी
and also the war. Already आमे discussion करचे war रे केते destruction होचे आमे जानिचे जोटा कि आम आखि आगे केते war होची तो पिला माने तार impact कोन पकोची ए सब होला impact हां कोन impact it leads to जिते जिते आपण माने पढी के आसले नि केना जिते disaster पढी के आसले सब आगो disaster एडी थुआ आइ गला due to climate change it leads to global warming, it leads to drought, it leads to cyclone, flood, landslide, earthquake, sea level change, heat wave, cold wave. I will discuss this chapter right now. ए सब आग अफेक्ट करूची आम जितक आपण पढ़ी के आसिले जिते सब आम ये डिस्कशन कले से सब आग लीड्स टू क्लाइमेट चेंज ए सब आमर क्लाइमेट चेंज पाई बोली ही होउची तार सॉल्यूशन कौन पिला माने आर सॉल्यूशन हैला केवल आमे ही आको सॉल्यूशन करि परिबा आउ किछ नै सॉल्यूशन हैला आमे राइट ए जो कंटीन्यूअस इंक्रीज होची टेंपरेचर रे सॉल्यूशन हैला आमे सॉल्यूशन कोन ना वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एरिया सो दैट वी कैन समहाउ मैनेज दिस काइंड ऑफ नो आमे ए जो सिचुएशन टू आमे ओवरकम करि परिबा एंड मैनेज करि परिबा सो दिस आर द बेसिकली आको मन रखिबे क्लाइमेट चेंज and it leads to heat wave and cold wave जोटा कि मैंने कही देबी आर स्लाइड नाही पिला माने ध्यान रे सुनिबे आ मन रखिबे heat wave and cold wave हैला आर एटा खाली कहिबी इतरे किछ स्लाइड नाही यार heat wave cold wave कोन सुनंतु heat wave and cold wave कोन जनरली आमे जदी कहिबा in every area in a one normal temperature is there normal temperature गोटे प्रत्येक जगह गोटे normal temperature दरकार जेमति कि आमे कहिबा टेम्परेचर imbalance हबो if it is more than that it will happen something means no adverse situation will be there if it is less than that also the situation will go in a different way right so सबो जगह रे हमें कोन करिबा balance दरकार प्रत्येक क्षेत्र रे we need a balance not more than that not less than that more than that it may be no some kind of problem will be there less than that and some kind of problem will be there so we need always we need balance so it is safe situation ही होची कोन ना जनरली जति हमें कहबा हीट वेव एंड कोल्ड वेव डियर स्टूडेंट्स हीट वेव और कोल्ड वेव कोन करची ना एवरी एरिया वन नॉर्मल टेम्परेचर इज देयर इफ द नॉर्मल टेम्परेचर विल गो टू इन ए बियॉन्ड दैट माने नॉर्मल टेम्परेचर टू जति हमें ऊपर को गले पॉजिटिव एरिया को गले इफ वी विल गो इन ए मोर देन दैट नॉर्मल टेम्परेचर रो मोर देन दैट गले ताले हमें कोन कहबा इट लीड्स टू हीट वेव गोटे टेम्परेचर ऊपर को बढ़िला जनरली आमे कोन कहूचे ना हमर जीरो रे हमर कोन होची जेते हमर वाटर टा 0 डिग्री को आसे होची हमर रेफ्रिजरेटर आइस कंडीशन को जाउची जेते हमें 0 रु बढ़ी 100 को जाउचे सेते हमर कोन होची बॉइलिंग होची हम वाटर टा पूरा बॉईल हे जाउची हैला तो मिडिल ला धरंतु 0 टू 100 भीतर मिडिल कोन हैला हमर 50 हमें जदी एठु ए सिचुएशन रे देखिबा हैला so 50 रो हमें तळु को आसीबा 50 रो हमें ऊपर को जिबा so एटी कोन हैला रे नॉर्मल टेम्परेचर जो हमें सेट करछे if we will go to more than that beyond that then what will happen it leads to heat wave it is high pressure in that particular area particular region and it leads to anticyclone situation will happen in that area anticyclone cyclone नाही cyclone हैला आपनकर हमें अदर एरिया को चल जिबा एटा हैला anticyclone जोटा को कहा जाउची El Nino, ELNINO, El Nino. El Nino मान हैला कोन anticyclone El Nino मान हैला गुरुचाप हैला लघुचाप ऑपोजिट कोन हैला पिला माने गुरुचाप and El Nino situation high pressure anticyclone heat wave ए सब क्रिएट हबो if we will go to the more than the temperature जेतला हमें ऊपर को जिबा हैला जेतला हमें टेम्परेचर गोटे नॉर्मल टेम्परेचर तळु को आसीबा ताको हमें कोन कहबा कोल्ड वेव हैला कोल्ड वेव रे कोन आसीबो जस्ट ऑपोजिट ऑफ द हाई प्रेशर इट इज लो प्रेशर हमें पढ़ी छ ऑलरेडी लो प्रेशर हैला राइट एंड इट लीड्स टू साइक्लोन काइंड ऑफ सिचुएशन आसीबो हेड द एंटी साइक्लोन एटा हैला साइक्लोन सेटा एल नीनो एटा हैला ला नीनो LANINO ला नीनो जोटा कि हमें कहूचे कोन जत्ते ला नीनो सिचुएशन बढ़िबो सेते साइक्लोन प्रेशर आसीबो लो प्रेशर हे कि धीरे धीरे हमर कोन हबो ना कोल्ड वेव आड को हमें जिबा So normal temperature, it is one temperature is there set in a different area. If it will go beyond that, more than that, we can call as a heat wave. Less than that, we can call as a cold wave. El Nino and La Nino. Hala, ako man rakhibe. Generally, ame kahiba cold wave.
Cold wave कौन? Cold wave is a seasonal, hot wave is also a seasonal. Cold wave generally it will happen in a winter season. Cold wave टा कौन इन हबो कि पिला माने? No. Cold wave generally केते बेले हुए? ना it occur in a winter season. Likewise, heat wave is generally happen in a summer season. एई ना heat wave होची आज सिना वर्षा आइ गला. हां heat wave टा केते होची? Summer season रे. सेटा केते होची? Winter season रे. Right? So generally जदि हमें कहबा cold wave, it is unusual drop in the temperature. जितले temperature रे पूरा unusual drop करिवो temperature टा, हां जितले आसीबो हमरो less than that हे जिवो, then in a it may be a long duration of time or it may be a short duration of time that we can call as a cold wave. गोटे long duration पाई हो कि गोटे short period of time पाई हो हैला जदि abnormally temperature रे हमरो कोन करिवो decrease करिवो drop करिवो then we can call as a cold wave. Generally आमे जदि एही कहिबा cold wave आमे केते बेले डिक्लेयर करिबा students cold wave as per the IMD Indian Meteorological Department declare some the cold wave and heat wave and the is सब तार department से केते बेले cold wave declare करिवो if in a plain surface plain area जेंति कि हमरो एमटीआर एरिया रे if in a plain surface plain area the temperature is 10 degrees Celsius or less than 10 degrees Celsius temperature टा जेतेले 10 degrees Celsius को आसी गला हला तो सेही एरिया को कहा जिवो कोन डिक्लेयर करा जिवो कोल्ड वेव जदि कोल्ड वेव चली but if the things it will happen कोठी ना in a basically what आमे कहबा hilly area रे जते बेले कोल्ड वेव डिक्लेयर होबो केते बेले ना in a plain surface जेतेला हमर आसला डिक्लेयर when the minimum temperature is 10 but if in a hilly area if the minimum temperature is less than 5 जेमति कि हमर 5 है कि 0 आडू को चली गला so सेठी हमें कोन कहिबा ना in that particular area the cold wave is there 0 है कि हमर ताराउरी तळु को चला hilly area रे specifically सेटा को हमें कहिबा कोन कहिले ना cold wave कहिबा बुझिले so 10 degree for plain area 0 degree for the hilly area or less than that जोटा कि hilly area ताको हमें cold wave declare करिबा so generally if we can say plain surface ame heli सब plain surface रे रहिले and in a hilly area for example we can say Jammu and Kashmir no Uttarakhand Himachal Pradesh ए सब जते सब high altitude areas are there no and Himalaya regions ए सब snowfall area ए सब एरिया रे जेतेले 0 डिग्री टेम्परेचर आउरी तळु को जिवो पूरा सेही पर्टिकुलर से एरिया रे ताहला हमें सेठी कहबे द कोल्ड वेव हमरो चलीची हैला हेवी कोल्ड वेव वेरी सिवियर कोल्ड वेव ताडु 10 रु तळु को जदी खसिला वेरी सिवियर वेरी सिवियर एमटी हे जिवो 0 रु तळु को खसिला देन हमें कहबे सिवियर वेरी सिवियर so ए सब होला जनरली नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स्ड बाय द नो IMD department Indian Meteorological Department. If it will go less than that, then we can declare as a cold wave based in the plain area as well as the kon amara kon कहली ना hilly regions पाई में hilly area पाई. Same way we will discuss the heat wave. Heat wave again एठी हम कोन हैला ना सेठी temperature रे suddenly decrease कला एठी कोन हबो abnormal way रे temperature रे increase करिवो high temperature in a abnormal way no amar jota ki na chalichi jota ki at the time of summer season so jeta abnormal way re temperature re increase karibo then we can declare as a high means heat wave but heat wave kete bele ko ajibo eina ame kahiba ki in the current situation summer season is there and temperature is this ame jo feel korche this kind of environment and temperature is there. So shall we call this is a heat wave situation? No, not. काहे कि ना एठी मध्य गुटे टेम्परेचर सेट करा जायछि जेमिति कि हमें कहिबा डियर स्टूडेंट्स if in a plain surface plain area कोन हबो
ना the temperature if it will more than the 40 degree Celsius up to 40 degree Celsius we cannot declare as a heat wave. Heat wave हमें declare करी परिबा नहीं. जदि temperature up to 40 degree Celsius is there, then we cannot declare as a heat wave in a plane surface. If the temperature it will raise more than 4 to 5 degree Celsius, 45 degree पर्यंत चली गला, हैला, then we can call as a heat wave. ସେଇଠି ଆମର heat wave होचे. एटा सेटा गोटे दिन ପାଇଁ ହେଲେ हबनी. It must be continuously no 2 to 3 days. एटा गोटे particular period ପାଇଁ ରହିବା दरकार. गोटे दिन ହେଇगला ମଧ୍ୟ ଆମେ कहबा जे heat wave ये ହେଲା. Heat waves kind of situation is there, but it must be in that particular area more than 3 days through amara say particular area jodi continuously 45 degree Celsius रे रहिला temperature, then आमे कहबा heat wave amara होउची. More than 45 degree Celsius जति आउरी गला, again आमे कहले जेमती cold wave कोन कहले 10 ହେଲା amara cold wave, तापरे तळुकु जतेले जीव plain area रे आमे कहबा severe, very severe. Likewise, if more than 45 degree Celsius if the temperature will be there in that particular area, then we can call as a severe heat wave and very severe heat wave that we can declare. आमे declare करिबानी, IMD department declare करिबा. हैला. Likewise, in a hilly area, जदि आमे कहबा hilly area रे सेठी केतला heat wave declare करिबा if more than 30 degree Celsius will be there in that particular area, hilly region, no? जदि 30 degree रो बढ़िला 30 degree ରୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଗଲା up to 35 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ hilly region ମାନଙ୍କରେ ସେଠି କହିବା heat wave ହଉଛି, and it continuously the things should be there in that particular area, continuously ରହିବା ଦରକାର, right? And ଯଦି 35 ରୁ ଆହୁରି ବଢିଲା ତାପରେ ଆମେ severe, very severe କହିବା hilly area. So dear students, so basing on these, the heat wave and cold wave identified by and the heat wave and cold wave declared by IMD department, Indian Meteorological Department, based on the temperature. It may be heat wave or it may be cold wave, based on the temperature, based on the El Nino and La Nino situation. Got it, dear students? एटा को आको एमती लेखिबो इतरा मोर किछ स्लाइड नै एटा खाली कहिबा जिंसटा इतरे मते स्लाइड बनै नै इतरे. मैम गोटे क्वेश्चन अछि. हां कोतु. मैम जदी माने करो हमें सिक्किम देखचोंदी कि उत्तराखंड देखचोंदी स्पेसिफिक केतरा रीजन रे माने जो जगह के टेंपरेचर ऑलमोस्ट सब बेले पय माइनस रे रहउची कि 0 डिग्री रहउची. ओके. सेटा को हमें कोल्ड वेव कहबा ना जदी माइनस रु आहुरी अधिका तळुकु जीव ताले हम कोल्ड वेव कहबा. सेटा जो सब बेले जो टेंपरेचर ता रहउची सेटा होची सेटा नॉर्मल टेंपरेचर. नॉर्मल टेंपरेचर एक्जेक्टली. यस. जे सेडु जदी आपनको तळुकु खसिला 5 डिग्री पर्यंत तळुकु खसी गला सेटा सेई एरिया रो नॉर्मल सब बेले से टेंपरेचर ता रहउची सेडु 5 डिग्री पर्यंत तळुकु खसिला तापरे हमें कहबा कोल्ड वेव. 5 डिग्री रो आउरी तळुकु खसिला हैला तापरे कहबा सिवियर कोल्ड वेव. आउरी 5 डिग्री आउरी तळुकु 15 डिग्री पर्यंत तळुकु खसी गला सेठी कहबा वेरी सिवियर कोल्ड वेव. हम ताले 5 डिग्री टे होची तार पैरामीटर जदी 5 डिग्री पैरामीटर हां ताले इधर हमें ताको हॉट वेव कहबा कि कोल्ड वेव कहबा. माने कर सिक्किम रे वर्तमान 5 डिग्री सेल्सियस हे गला जोटी कि नॉर्मल 1 डिग्री था, 0 डिग्री 1 डिग्री था, तो हमें ताले कहबा तार हॉट वेव स्टार्ट हे गला. हां नहीं हॉट वेव पाई कहि कि सेइड आसीबन. हॉट वेव कहूची म कहली ना हॉट वेव पाई हला आपनकर हिली एरिया रे हॉट वेव रो पैरामीटर हला 30 डिग्री सेल्सियस. हम किंतु जो जगह रे मन कर तांकर नॉर्मल टेंपरेचर ही 5 डिग्री 7 डिग्री नॉर्मल टेंपरेचर 5 डिग्री 7 डिग्री रहिले भी से एरिया रे हैला जोडा कि गोटे सेट करा जाय छै टेंपरेचर फॉर हिली एरिया एंड दी फॉर नॉर्मल सरफेस सेटा को 30 और 40 रखा जाय छै. 30 रो जदी ऊपर को बढ़ेला अछि ना कि जे हिली एरिया जेमते हम जदी मेघालय को कंसीडर करिबा तो तांकर 15 20 डिग्री रहउची तो तांको पय 30 डिग्री हेले ठीक अछि. यदि कंसीडर करिबा सिक्किम को तांकर 5 डिग्री 7 डिग्री अछि मते पचाले तो सब बेले तो से माने कहले हमको 10 डिग्री हेले भी गरम लागुची हां तांके सेटा टॉलरेट करि परिबेनी. हां से क्षेत्र रे हमें 5 डिग्री नै परिबा. हां हां तो सेति पे तो हमें तांको पे हीट चेंज हे जिवो. हां हां हे जिवो 5 डिग्री जनरली रखा जाउची तळुगु जते 5 डिग्री तळुगु 40 रु 45 आमुगु सिना जणा पड़नी 40 रु 45 45 रु 50 50 रु ये कला सो 51 आसी गला तो सेमती हेकरी हीट वेव सिवियर हीट वेव वेरी सिवियर हीट वेव सेमती हबो एग्जैक्टली. तो ताले से जो अपन 30 डिग्री टा करले ताले सेटा केवल स्पेसिफिक केतरा जगह रे ही होची स्पेसिफिक केतरा जगह रे. हां 30 डिग्री धरंतु आमे कहले कोन जेमति कि हिली एरिया जोटा कि आमे जनरली एम कहबा उत्तराखंड हैला उत्तराखंड रे
आपण आमे जदि एना जिबा ये एरिया को कोल्ड वेव एरिया मतलब जो भी ये रे जिबा से जनरली तांकर रहे 30 25 30 एमती एसेट से एरिया रे 10-15 डिग्री थाए एबे मैम। हाँ हाँ तो सेठी सेही अनुसार सेटार कैलकुलेशन करा जिवो एनालिसिस करा जिवो तो 30 डिग्री Right. सेमती किसी पैरामीटर नहीं कंसीडर करछि कि तांको माने नॉर्मल टेंपरेचर रो 5 डिग्री जदी नहीं जनरली कहा जाउची कि प्लेन एरिया आउ हेला हिली धरंतु आमे एठी हिली नबा कहिले आमे मु एठी एग्जांपल भी आपन को देली हिली एरिया रे जेमिति कि आमे कहले जम्मू एंड कश्मीर हला हिमाचल प्रदेश हला उत्तराखंड हला हाँ एई सब एरिया पई मध्य जनरली कहा जाउची कि आर तो नॉर्मल टेम्परेचर को आगे एनालिसिस करा जिवो हला आर Yeah. प्रत्येक दिन नॉर्मल टेम्परेचर केते रहूची हला ता तळकु जदि 5 डिग्री कमिला ताहाले आमे ताको कोल्ड वेव करी करिका नै का जिबा हला धरंतु आपण एना हिली एरिया गले हमर कोरापुट साइड को गले हला कोरापुट साइड रे जनरल प्राय ठंडा रहे तो सेठु जदि तार सेठी पैरामीटर सेट करा जायची 30 डिग्री धरंतु हला सो से 10 डिग्री कहला हमें 10 डिग्री कोल्ड वेरी कोल्ड हमें अलग अलग माउंटेन एरिया रे भी वेरी करछि वेरी करबा आमे कहले ना हमर एठी धरंतु आमे एठी धरिबा हमर धरिबा कोरापुट धरिबा आमे जम्मू कश्मीर धरिबा सो तार नॉर्मल टेम्परेचर टू केते तळकु कमुची से अनुसार हमर कोल्ड वेव ता जनरली डिक्लेयर करा जाय तले मैम से जो 30 डिग्री टा माने सेमती कोन फिक्स नहीं तो नहीं 30 डिग्री जनरली कहूची माने ये कहूची आईएमडी डिपार्टमेंट कहूची कि 40 डिग्री सेट करा जायची फॉर प्लेन सरफेस को जेमति कि आमे मु हमर एरिया रो नेबी ओडिसा रे 40 डिग्री रो जदी ऊपर को गला 45 पर्यंत गला ताहले आमे कहबा कंटिन्यूअसली 3 दिन रो अधिक रहिला से एरिया रे ताहले आमे कहबा हीट वेव चलिला हैला देन 45 रो जदी क्रॉस कला ताहले आमे कहबा एटा हला वेरी एंड सिवियर हीट वेव वेरी माने सिवियर हीट वेव हला राइट चलला से 3 दिन कंटिन्यूअस एमती रहइबो सेम जिंस जदी आसिला हिली रीजन से कहूची 30 डिग्री सेल्सियस रहिला हिली रीजन आमे कोरापुट साइड को नेले 30 हमर जदी 40 रहिला कोरापुट रे केते रहइबो धरंतु पूरा हिली एरिया रे 30 डिग्री रहिला हैला 30 डिग्री देला हिली एरिया को 30 रे जदी से बढ़िला कमिला ताहले ठीक अछि 30 तार हला सेरा नॉर्मल टेम्परेचर सेटू बढ़िला 5 डिग्री 35 डिग्री सेठी हे गला ताहले सेठी हमें को कहबा से जगह को हमें कहबा हीट वेव हला कहि के कंटीन्यूअसली मोर देन 3 डेज हला हैला सो एटा को मैम सेटा तो ठीक अछि मैडम माने कोन कोरापुट रे तार नॉर्मल टेम्परेचर हला 20 तो ताको हमें हीट वेव केबे डिक्लेयर करबा माने मोर देन 30 और 25 मोर देन 30 पैरामीटर रखछि मोर देन 30 मैडम ताको पय तो 20 रे 25 सुनंतु जनरली एटा आईएमडी डिपार्टमेंट कहूची तार नॉर्मल टेम्परेचर केते सब दिन रहूची हैला आमे जोटा कि एटा को आमे कहले 30 40 50 ए सब पैरामीटर रखीची बट ओवरऑल इट्स वेरी फ्रॉम द एरिया टू एरिया जेमति कोरापुट आमे आउ रहिला जम्मू एंड कश्मीर हैला दिल्ली जम्मू कश्मीर आमे कोरापुट तार नॉर्मल टेम्परेचर केते प्रत्येक दिन रहूची सेठू जेते बेले सिवियरली फॉल कला आमे कोन कहले फॉल कला टेम्परेचर टा देन सेटा को कोल्ड वेव बोले डिक्लेयर करा जी सिवियरली फॉल करी करी चलला हैला सिवियरली बढ़ी चला हीट वेव बोले डिक्लेयर करा जिवो 5 डिग्री सेठू बढ़िला तार आपण कहले ना सब बेले कोरापुट रो टेम्परेचर रहूची 20 हैला ताहाले कोरापुट साइड रे जे केते डिक्लेयर करिवो सेटा आईएमडी डिपार्टमेंट सही एरिया पे मुली गुटे फिक्स करथिबो जे एठी केते डिग्री हला परे सेटा हमें कहबा हीट वेव हैला तो धरंतु हमें आपण कहले कि एना जम्मू कश्मीर रे सेही गुटे टेम्परेचर फिक्स होइछिबो ताडू तळकु जदि डाउन को गला ताहाले से डिक्लेयर करा जिवो कोल्ड वेव जनरल तो से हीट वेव बहुत कम रहे हां हीट वेव से सब एरिया रे न थाए बट सेही जदि ऊपर को गला हीट वेव न थाए केमती हबो हीट वेव होउची बोलता हमर ग्लेशियर्स मेल्ट करछि ना मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स नले काहे कि ग्लेशियर्स मेल्ट करतांता काहे कि हमर हिमालय रीजन्स रो सब आइस मेल्ट करतांता काहे कि सी लेवल रेज हेतांता सो हीट वेव होउची कहि कि होउची जदि हीट वेव हेना त ताले से एरिया रे सब बळे माने हमर त सही आइस एज रे थांते आमे सिना देखिबा पई जानिबा पई आमे कहि दोउचे बट सेठी से टेम्परेचर बढ़ुची कहि कि त ग्लेशियर्स मेल्टिंग होउची ना जोटी ड्रास्टिकली मेल्ट करूची एमिति न कि एमिति सेमते मेल्ट करूची नो ड्रास्टिकली मेल्ट करूची एमिति मेल्ट करछि जे सी लेवल हाई लेवल ये कि बहुत सारा देखिबे ये चली गलानी सी भीतर को
तो एटा जनरली कुहाजिबो स्टूडेंट्स सेटा आईएमडी डिपार्टमेंट रो तार आमे गोटे पैरामीटर पढुचे ओवरऑल आमे गोटे पैरामीटर आईएमडी डिपार्टमेंट सेट करचे फॉर द कॉमन एरिया राइट जेमति आमे ओडिसा नेले कि वेस्ट बेंगल नेले कॉमन सरफेस पे धर गोटे आमे आईएमडी डिपार्टमेंट फिक्स कला बट एटा वेरी करची आमे केमति कहिबा जे से एरिया रे एतिक टेंपरेचर हो नथुबो बोली होथुबो कहि कि त ग्लेशियर्स मेल्ट करूची राइट नो त आमे आइस एज रे ही था मोर तो ग्लेशियर्स मेल्ट करी न था बुझुचंती ना सो सेटा पर्टिकुलरली से टेंपरेचर ऊपर को सेही नॉर्मल टेंपरेचर तार नॉर्मल टेंपरेचर ऊपर को गले हीट वेव तार नॉर्मल टेंपरेचर रो तळु को आसले कोल्ड वेव एटा हला जोटा फॉर कॉमन सब आडू कॉमन रे एटा कुआ जाउछ ओवरऑल पाई बोल हला बाकी द वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन बुझिले सेटा एक्चुअली कोन कि सब कथा कंफ्यूजन हेला तो तीनटा एक्सपीरियंस हम कहूँ जो मेघालय जाइली तो सेठी तांकर मिनिमम टेंपरेचर थिला 15 डिग्री सेटा भी हिल एरिया रे जाउची कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट नहीं सेटा डिपेंड करछि नहीं जो डिपेंड करछि जो 15 डिग्री मिनिमम टेंपरेचर थिला सेटा डिपेंड करछि को सीजन रे मिनिमम 15 डिग्री टेंपरेचर थिला नॉर्मल तांकर नवंबर टाइम रे 15 थिला बाकी अदर टाइम रे तो तांकर मौसम माने ये था वर्षा होता मार्च मास रे भी तांकर मार्च मास रे भी कोन तांकर 15 रहइबो अप्रैल मास रे भी कोन तांकर 15 रहइबो मैक्सिमम तांकर 17 की 18 डे माने 17 की 18 जाय जनरली मार्च मास रे वर्षा होय से पड़े हां वर्षा हुए स्टिल माने मो कहूची जेतले माने हाई हमर येटा होउची कोल्ड वेव टा आसुची माने टा होउची हां एमती बर्तन सिक्किम रे 4 डिग्री 5 डिग्री अछि नहीं जदी जल्दी सुनतो नॉर्मल थाए आमे भी जेतले जाइथिल उत्तराखंड हां केदारनाथ बद्रीनाथ सब उत्तराखंड रे मैम अधिका थाए उत्तराखंड रे अधिका थाए उत्तराखंड रे स्पेशली जदी अपन टॉप को जाउचंती ताहले से जगह रे थिबो 6 डिग्री 7 डिग्री थाए स्पेशली बद्रीनाथ हिला केदारनाथ हिला नहले तळे पूरा गरम था हैला तळे पूरा गरम थाए चली परिबो किंतु बद्रीनाथ केदारनाथ रे ही सेठी पूरा तार आइस ता थाए किंतु ये थाए हैला तो मो सेही पई कहली सुनो सेही पई मो कहली सुनो सेही पई मो कहली इट्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन हैला आईएमडी डिपार्टमेंट आईएमडी डिपार्टमेंट से तार पैरामीटर सेट करथिबो से सब एरिया पे ताडू लेस करले हबो कोन ताडू माने मोर देन दैट करले कोन हबो सेटा आईएमडी डिपार्टमेंट सेही पर्टिकुलर एरिया पे पैरामीटर सेट करथिबो अच्छा माने डिपेंड करते स्टेट टू स्टेट के रीजन टू रीजन ये एरिया रीजन टू रीजन 30 डिग्री बोली माने किछि सुनो एटा जो हमें पढिले नाही एटा जो हमें पढले फॉर कॉमन फॉर एवरी एरिया कॉमन हमें लेले कॉमनली लेले हैला जेमति कि हमें ओडिसा रे आपण इना कहिबे हमर ए सिचुएशन रे एटा कॉमन गोटे से गोटे सेट कला बट अगेन एटा जेमति वेरी करिवो रीजन टू रीजन से तार रीजन रो नॉर्मल टेंपरेचर केते ताडू अधिक गले से कहबो हीट वेव ताडू तळु को गले कहबो कोल्ड वेव हैला से एरिया ऊपर डिपेंड करछि सेटा आईएमडी डिपार्टमेंट से एरिया रो पैरामीटर देखि के सेट करी माने हमर ऑन स्किल लेवल दरकार हां कोन कहले नहीं मैम एक्चुअली पढ़ी कथा गुड कॉलेज हैला तो सेटा रीजन ऊपर पूरा डिपेंड करछि एंड सेटा आईएमडी डिपार्टमेंट सेट करिथिबो आपण जो एग्जांपल दउचंती सेडी आईएमडी डिपार्टमेंट सेट करिथिबो ता पैरामीटर जेमचंती ना सो गोटे पैरामीटर सेट करथिबो मोर देन दैट लेस देन दैट सेटू तार ऊपर को गले तार तळ को गले तो ओवरऑल एग्जाम रे असले पहले हम 30 डिग्री लिखिबार अछि 5 डिग्री एग्जाम रे जनरली हमें एटा गोटे ओवरऑल निया जाउची सुनतो एटा हला ओवरऑल हीट वेव हमर ओवरऑल जदी हमें नबा हमर सिचुएशन को से देखि कि से कहूची 40 डिग्री तळु को रहिले हमें हीट वेव बोली कहिबा नाही इने नॉर्मल सरफेस माने कि हमें मान सब रहिले प्लेन सरफेस रे हमें सेटा को काई काउंट करबा सेटा प्लेन सरफेस रे गला कि नाही हमें प्लेन सरफेस रे रहिले सो 40 डिग्री पर्यंत से कहूची जदी ता ऊपर को गला ताले हीट वेव बोली हमें डिक्लेयर करबा कंटीन्यूअसली जदी रहिला मोर देन 3 डेज हैला बट इट वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन सी तार नॉर्मल टेंपरेचर एटा हमर नॉर्मल टेंपरेचर को नै केछि वैरायटी टाइप रे हमर रहिछि कोन आईएमडी डिपार्टमेंट तार पुरी हेड ऑफिस अछि हां तार पुरी बहुत सारा रीजन रे तार ये अछि से सब टाइम एनालिसिस करूछि तार डिवीजन सब डिवीजन हेड ऑफिस रहिला सो से अनुसार से एनालिसिस करी हमें कोन से अनुसार हम एनालिसिस करी कि कहि परिबा इज इट पॉसिबल हमें नॉर्मल वे रे डिस्कशन करछे हमें कहिबान जे ना उत्तराखंड रो केते टेंपरेचर रहइबो तार सेटा आईएमडी डिपार्टमेंट पैरामीटर फिक्स करथिबो बुझिले ना
सो आमे माने मन रखिबा 40 डिग्री फॉर दी माने कोन कहले हमर नॉर्मल जदि आमे कहबा ओवरऑली जहा पाठ कहूची जहा आईएमडी डिपार्टमेंट कहूची 40 डिग्री एंड 30 डिग्री 40 डिग्री रो जदि ऊपर को गला प्लेन सरफेस रे देन वी कैन से हीट वेव एंड 30 डिग्री जदि ऊपर को गला आपण मान जाई कि देखि परिबे हला आईएमडी डिपार्टमेंट रे एंटायर येटा जाई ता ऊपर देखो पढो हला इट इज एवरीथिंग देयर इन दी गूगल जदि आपण को डाउट होची हला 30 डिग्री रो जदि अधिक गला ताहला हमें कहबा कोल्ड वेव आईएमडी डिपार्टमेंट जा कहूची मो कहूनी ता परे आईएमडी डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर अछि हां तार मेट्रोलॉजिकल सेंटर तार सब डिवीजन अछि तार से अनुसार से तो एनालिसिस करी कि रीजन बेसिस ये बेसिस ये तार का को हिट कहबो का को कोल्ड कहबो का को उत्तराखंड को केते कहबो सिक्किम को केते कहबो कोरापुट को केते कहबो आमो केते कहबो दैट इज डिफरेंट इश्यू बुझिले ना बट इन ए नॉर्मल सिचुएशन रे जहा आईएमडी डिपार्टमेंट कहूची दिस इज द सिचुएशन 10 डिग्री जदि रहिला दिल्ली रो सिचुएशन 10 डिग्री रो तळु को खसिला टेम्परेचर ताहला हमें कहबा कोल्ड वेव वेरी सिवियर कोल्ड वेव 0 रो जदि तळु को खसिला हिल एरिया रे प्राय ताहला हमें कहबा कोल्ड वेव हला ताठु आपण जदि रीजन वाइज जानिया को चाहछथि देन आपण को आईएमडी डिपार्टमेंट रो ताकू फॉलो करिया को पड़ी बुझिले ओवरऑल सिचुएशन हला या बुझिले ना सर माने बुझिले जा डाउट थिला यस हैला आउ ओवरऑल जदि आपण तार पर्टिकुलर रीजन को जिबे देन मु ता ऊपर जानिनी आपण यू कैन गो थ्रू दी आईएमडी डिपार्टमेंट रो तार जो रेशियो को सेडी जाईगिरे आपण बुझिबे हैला ओके ओवरऑली आईएमडी डिपार्टमेंट एया कहूची चलंतु आपणकर गला सेटा क्लाइमेट चेंज हीट वेव और कोल्ड वेव ऊपर ताको मन रखिबे मोर देन दैट आपण ताको अधिक जानिबे आपण आईएमडी डिपार्टमेंट रो वेबसाइट को फॉलो करके यू कैन गो थ्रू दैट तब नेक्स्ट चलंतु तापर हला आपणकर कोन डिफॉरेस्टेशन वन चैप्टर इट इज देयर दैट इज डिफॉरेस्टेशन कोन देखो तो हमें डिफॉरेस्टेशन सब जगह रे कहि आसले प्रत्येक स्टेप्स रे कहि आसले ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दिस इज हैपनिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग and due to deforestation such kind of climate change is there एया होची वो होची सब को कहबे हैला डिफॉरेस्टेशन कोन देखो डिफॉरेस्टेशन basically we can say it is a direct or indirect human activity हैला एटा डायरेक्टली करू कि इनडायरेक्टली करू जोटा कि एटा होची मनीषो कोन करूची ना जनरली it related to the human activity doing variety kind of things related to forest it means cutting off unlimited tree and basing on this kahi ki cut korchi unlimited tree due to to fulfill the human want and need nijor need को want को fulfill kariba pai se kon korchi amaro jungle को काटी चलीछि deforestation it may be directly or it may be indirect way direct way रे human तार want को fulfill करिया pai forest को काटी चलीछि right so basically we can say deforestation is the full of large scale removal of a forest or area of tree in order to clear land for human development जोटा कि हमर कोन करूची ना पूरा large scale of removal of forest and trees बहु परिमाण रे कोन पाई से कॉजेस तो हमें एना जाई की पड़ी राइट कारण आरो बहुत अछि जोटा कि अल्टीमेटली द ह्यूमन want to fulfill their own want and own wish forest हमको कोन देउची पिला माने देखंतु forest who it is providing food and fuel to us खाइबा हमको देउची खाद्य देउची fuel देउची राइट ऑक्सीजन जोटा कि बंचिबार गोटिए मात्र रास्ता without oxygen no one can survive जोटा केही बंची परिबानी राइट सो जोटा कि हमको दउची बंचीबार रास्ता जोटा कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करची एंड विदाउट रेन आल्सो वी कैन नॉट सस्टेन पानी बिना आपण कहबे ग्राउंड वाटर केते दिन पर्यंत हम सर्वाइव कर परिबा ग्राउंड वाटर भी गोटे सर्टेन पीरियड रे बंद हे जिवो इफ द रेनी कंटीन्यूअस रेन और द नॉर्मल रेनी इट विल बी नॉट हैपन इन दैट पर्टिकुलर एरिया राइट आल्सो इट balance and maintain the ecosystem and also it provide basically maintain the soil ए सब जोटा कि गछ जदि न रहला मु कोन कहली soil erosion गछ को माटी को किए भिडी के रखुची गछ भिडी के रखुची गछ काटी देले कोन हबो
पूरा खाली लैंडस्लाइड हबो चारिआडे ध्वंस होई जिवो राइट सो एटा हमको दोचे फॉरेस्ट आमे ताको कोन कोचे ना फॉर फुलफिल आवर ओन नो नीड ह्यूमन वांट एंड ह्यूमन नीड फॉर कॉजेस कौन पे हमें डिफॉरेस्ट करूचे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस घर बनैबा पई ऑब्वियसली ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फायरवुड जेमती कि गवर्नमेंट मझिरे बयान कला कि कौनसी लोक काठ चूल्हा रोषेई करबन बट एना कौन कला गैस अभाव रे तमे जहा करचो करो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज डैम रोड रेलवे ऑब्वियसली कटक रु सॉरी भुवनेश्वर रु पुरी रोड हैला पूरा कोटी कोटी गछ कटा हे गला बट ता अगेंस्ट रे सेति कि गछ लगा गला कि नो डैम तयारी होची ये हमर कोन कहिले हमर माइनिंग होची ब्रिज होची रोड होची ता अगेंस्ट रे सेति कि गछ लगा जाउची कि नो केतले घर कंस्ट्रक्शन होची माने हमर भुवनेश्वर आडे कटक आडे व्यापी गलानी सेपटे पुरी आडे सेपटे खोर्धा आडे चारि आडे से अगेंस्ट रे जेति कि हमर कंस्ट्रक्शन होची से अगेंस्ट रे गछ लागुची कि नो तो अल्टीमेटली कौन हो आम नीड फुलफिल होची बट अल्टीमेटली फ्यूचर कौन हम सेटा हमें जानी छे adverse situation will happen in the future right apart from these we also cutting unlimited of trees the people are doing for agriculture activity yes जंगल को निया लगे कि सफा कर दउचंती राइट फॉरेस्ट फायर लोक माने कर दउचंती हेडी सफा हले हमें कोन करिवो ना हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी करिवो सेठी गच्छ काटिगिरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बड़ बड़ इंडस्ट्री ये जाउची सेटअप हो जाउची बट से अगेंस्ट रे गच्छ लागुची कि नो इट मे बी इंडस्ट्री और इट मे बी वेराइटी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ए सब कट हमें ट्री काटी गच्छ को काटेचे फॉर पेपर फॉर पंचिस जहां भी हैला फॉर माइनिंग एक्टिविटी फॉर कल्टीवेशन ए सबु पाई बोली गच्छ काटी दउचे अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज बट हमें एटी कोन पाइबानी ए सब किछि पाइबानी नेदर इफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन इन द फ्यूचर फर्स्ट हमें कोन पाइबानी ना नेदर वी विल गेट ऑक्सीजन नॉर वी विल गेट फूड ना पानी पाइबा ना ऑक्सीजन पाइबा ना खाइबा पाइबा देन सर्वाइव करिवो केमती जणे विदाउट दिस वी कैन नॉट सर्वाइव हमें तो हमें एंटायर माने कोन कहिलो हमर एंटायर एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हे जबो आर इम्पैक्ट एडवर्स इम्पैक्ट कौन पकोची पिला माने आ इम्पैक्ट पकेबो ही पकेबो कौन इट लीड्स टू सब प्रकार जेते आपण आगुरु पढ़ी के आसले इट लीड्स टू आपनकर ग्लोबल वार्मिंग इट लीड्स टू इंक्रीज द पोल्यूशन ड्रॉट साइक्लोन लैंडस्लाइड जेते आपनकर डिजास्टर अछि जहां ऊपर आपनकर क्लाइमेट चेंज रे पढ़ी के आसले दैट विल हैपन हियर due to the such kind of situation if the human being will not take care of these then in future such kind of situation will happen right so this is what the deforestation जदि आमे जेतिके गच्छ काटुचे सही अगेंस्ट जदि गच्छ लगेई दबा then ultimately कौन हबो आमे कौन करिबा ताले सॉल्यूशन कौन पिला माने देखो सॉल्यूशन हैला रिफॉरेस्टेशन ता माने कौन जेतिके गच्छ काटिला सेतिके गच्छ रिप्लांट करे reforestation deforestation we have to know how we can maintain the deforestation then if we will go for the reforestation जेति की गच्छ काटला सेति की प्लांट माने कोन करिबा हमें लगेबा ई ऑफिस सिस्टम जोटा कि हमें प्रत्येक जिंस हमें कहूचे ग्रीन एचआर ग्रीन मार्केटिंग ग्रीन एवरीथिंग नो ता माने जहां सब हमें करिबा हमें कोथरे पेपर यूज करिबा कोथरे भी पेपर यूज करिबा paperless work everything no it must be there through a computer through rame kariba paperless work kariba green hr green marketing green management concept we have to adopt so green city everywhere plantation is highly essential प्रत्येक लोक गोटे गच्छ लगेबो तो जेते कोटी लोक अछंती सेति के गच्छ लागिबो so green city green environment it should be there no एंड आ पाई बोली आपको कौन करिया पड़िबो ना एनफोर्स लॉ को हमको एनफोर्स करिया पड़िबो गवर्नमेंट तापे लॉ मध्य अडॉप्ट करिची वैरायटी काइंड ऑफ एक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट वैरायटी काइंड ऑफ एक्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ताकू समस्त मानिबा दरकार और ई लॉ और स्ट्रांग होबा दरकार राइट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट राइट जोटा कि हमर अडॉप्ट करा जाईची इको टूरिज्म करा जिवो
जोटा कि एंटायर टूरिज्म को नीट एंड क्लीन केमिति रखा जिवो सेई टाइप रो ताको करा जिवो पूरा कैंपेन करा जिवो क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी मैसिव कैंपेन create awareness towards the society each and every individual they should aware towards the society right ए सबू को आमे करबा को पड़िबो सो दैट कौन हबो ना अल्टीमेटली हमर ए जति हमें सब प्रकार स्टेप नेले ताहले अल्टीमेटली वी कैन maintain a healthy environment clean environment so that our next generation आमे तो भलो से सर्वाइव करिबा and our next generation they can live their life very happily in a green and clean and safe environment ए थ्रू रू से सर्वाइव करिवे आउ जदि आमे नाही आमे तो पूरा एनवायरनमेंट को विष कर देथिबो सेमाने आ कोन नेक्स्ट जनरेशन सस्टेन करिवो राइट सो ए हला हमर कोन आको खाली पढिबा पाई नुह राइट एटा को आमे बारंबार कोन कहूचे वी हैव टू अवेयर इन आवरसेल्फ एंड वी हैव टू अवेयर टुवर्ड्स द अदर पीपल वी हैव टू अवेयर द सोसाइटी मो रास्ता रे खाई कि जदि मु निजे ही फपाड़ीबी सब पाठ पढ़ी की रास्ता रे ताहाले जदि अन्य माने फपाड़ीबे ताल तो किछि जस्टिफाइड मु फपाड़ीबी नहीं जे फपाड़छि ताको अवेयर करेबी यदि समस्त ए टाइप रो स्टेप्स नेबे ताहाले हमें गुटे क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबा राइट सो दिस इज व्हाट द डिफॉरेस्टेशन व्हाट आर द कॉजेस एंड दिस आर द सॉल्यूशन आमे जदि गच्छ को आमे जदि माने गच्छ काटिबा ताले एनिमल्स माने कोड रहबे आमे जदि तांको को हिट करिबा से आसी हमको हिट करिवे जोटा कि आइना चलची एनिमल एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सेथिरे मरुचंती कोन दुई जण मरुचंती एनिमल्स एलिफेंट्स आसी कि मनुष्य को मारुची मनुष्य एलिफेंट को मारुची जोटा कि हाईली हमर डिस्ट्रॉय होची एंटायर नेचुरल एंड ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रक्शन होची जोटा कि चलची देखुचंती किते हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सो ए सब धीरे धीरे कौन हम बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट को चले जीव सो दिस इज फॉर द डिफॉरेस्टेशन वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट बुझिले पिला माने डियर स्टूडेंट्स क्लियर हैला ना किछि डाउट अछि Yes. हैला ओके तो चलंतु ओवरऑल हैला या आपनकर अप टू डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड राइट देन आपनकर tomorrow I will discuss काली आपनकर आउ गोटे चैप्टर मु डिस्कशन करबी हैला आउट डिजास्टर हाँ, मैनेजमेंट एक्ट कोन कहले हां डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेबी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी मध्य पढ़ेबी हैला ता पूर्व आपन को जा हां फॉरेस्ट्री टी स्टैंड्स फॉर टी स्टैंड्स फॉर ये कौन For थिला what? टी स्टैंड्स फॉर एफ रे फूड डला और ऑक्सीजन डला आर रेन टी टी टा कोड नाही की टी टा पळेला की सेटा देखा टी T for tree. T for stands tree. for tree na T stands for tree na T stands for timber 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 हाँ wood that means T wood sta- wood हाँ हाँ TIMBER wood wood good ହେଲା टी ଟା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା timber ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ wood ହେଲା तो चलंतु डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच मु एटी स्टॉप कली आपनकर आक्टा भी पढेबी सब किछि कवर करबी आ अछि आउ केतरा क्लास आपनकर रहिला हमर अपन क्लास के बिषय फ्राइडे ना ठीक है यार. और चैप्टर है चारटा अछि ती हां हां फ्राइडे मु सार देबी आ बाकी जहा थिबो आपनकर ओवरऑल डिस्कशन करबा आपनकर जो ऑफलाइन क्लास हबो देयर आई विल डिस्कस आउ जाकी जाकी बाकी जहा ओवरऑल रहइबो हैला देयर आई विल डिस्कस चलो थैंक यू बाय बाय मैडम लास्ट क्लास रे टिके हमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके देखिला हम टिके सेथरे प्रिपेयर हेकम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपनकर ये रे परा ऑफलाइन क्लास रे डिस्कशन हबो कहले सर मैंने स्लाइड से शेयर करियो स्लाइड सेंड कर देबी ना सब कर देबी आगे क्लास हट जाओ अरे एटा कोन एटा कोन मोर लीव ऑप्शन टा कुआडे चा पळेला अच्छा लो माने
ଏଠି ଲିଭ୍ ଅପସନ ଟା କାହିଁକି ଆସୁନି ରେ? କି ମ୍ୟୁଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କିଛି ବି ହଉନି? ତମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଦେଖିଲ? ଲିଭ୍ ଅପସନ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆସୁଛି ହୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ମୋର ଏଠି ଲିଭ୍ ଅପସନ ଟା ଆସୁନି। ମୋର ଅଛି ନା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ? ଉପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ବା ଘରେ। ଉପରେ ସେଟା ଲାଇଭ୍, ଟପ୍ ରାଇଟ୍ ସେଟା ଲାଇଭ୍ ଟପ୍ ରାଇଟ୍ ରେ ନାଇଁ ପା। ଯୋଉ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ କଲେ ହଁ। ହଉନି ପା କିଛି ବି। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ହେଇଯିବେ ନା? ହଁ ଇଏ ଯିଏ ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ରିମୁଭ୍ କରିନେଲେ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଅପରାଜିତା। କଣ କହିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମ୍ୟାମ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବି ତ ଆପଣ କଲ ମା କଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। କଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ। मैडम कहले को मैडम जानकारी सही पकड़ा है। सही पकड़े, पकड़ा है नहीं पकड़े, सही पकड़े। अपराजिता, हाँ, मेरे को थोड़ा होस्ट कर दो, तुम होस्ट हो गए हो। ओके ओके सर।
अरे मेरा वॉइस आ रहा है और बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, कोई थोड़ा बोल दो। वॉइस आ रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉ। सो फर्स्ट, corporate law we have discussed, and today we will discuss something called tax compliance. Before discussing this, let me first tell you what is tax. What is a tax? Tax is a compulsory contribution. Tax is a compulsory contribution. You have to pay tax compulsorily. It is a compulsory contribution by citizens of a country. To गवर्नमेंट। टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। टैक्स कौन देता है? एक कंट्री के सिटीजन देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। क्यों देता है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये पैसा लेकर रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है। सो टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। इट इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स है। हम टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि टैक्स के बदले गवर्नमेंट हमको एक सोसाइटी, सिविलाइजेशन देता है। नहीं तो हम जंगल में रहते। टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। एक ऐसा जगह पर हम रह रहे हैं जहाँ पर स्कूल है, कॉलेजेस है, रोड है, पुलिस है। इन सब का खर्चा तो लगेगा। इन सब का कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। इस सोसाइटल कॉस्ट कहां से आएगा? हम लोगों से आएगा। सो जो टैक्स है ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। ये कौन देता है? कंट्री के सिटीजन्स देते हैं। किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, गवर्नमेंट यूज दिस टैक्स मनी फॉर दिस सोसाइटी एट ए लार्ज। गवर्नमेंट ये टैक्स का पैसा सोसाइटी के लिए एट ए लार्ज यूज करता है। हमें क्लियर? ओके, नाउ जो टैक्स होता है, ये टैक्स दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। What is the difference between direct tax and indirect tax? Now please see, एक आदमी टैक्स पेमेंट करता है। जो आदमी टैक्स पेमेंट करता है वो अगर टैक्स को बियर करता है, उस तरह का टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब हियर द पर्सन who pay the tax, he bears the tax. जो पैसा पेमेंट करता है वो टैक्स को बियर करता है। इसका मतलब वो उसका बर्डन किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता है, उसी को बियर करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। यहां पर टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स लगा, तुम ये टैक्स को किसी और से कलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, तुम्हारा इनकम तुमको टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स, कंपनियों के केस में इनकम टैक्स को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स।
इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिसका वेल्थ है वो टैक्स देगा, गिफ्ट टैक्स, जो गिफ्ट दिया है वो टैक्स देगा। These are some example of direct tax. In case of direct tax, the person who bear the tax, pay the tax, he bear the tax. But in case of indirect tax, the person who pay the tax does not bear the tax. जो आदमी टैक्स देता है वो टैक्स का बर्डन को बियर नहीं करता है। इसका मतलब वो टैक्स का बर्डन किसी और को दे देता है। इट मीन्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। बेटा जैसे देखो, एक टैक्स के जीएसटी, या इसको पहले बोलते थे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स दुकानदार देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। कैसे देता है? अपने सेल्स के ऊपर देता है, लेकिन वो जेब से नहीं देता है। हम लोगों से जब भी सामान बेचता है वो उसका पैसा हमसे कलेक्ट कर लेता है। सो जीएसटी, सेल्स टैक्स, कस्टम, excise duty are example of indirect tax. So direct tax में जो पर्सन टैक्स देता है वो उस टैक्स का बर्डन को बियर करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन टैक्स देता है वो उस बर्डन का, उसका बर्डन को किसी और के माथे पर शिफ्ट कर देता है। तो जहां पर बर्डन शिफ्ट हो सके वहां पर बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जहां पर बर्डन शिफ्ट ना हो सके उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। एम आई क्लियर यहां तक? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे एक इंपोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। सो व्हाट इज इनकम टैक्स? बेटा इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम के ऊपर टैक्स, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इसके लिए कोई भी आइटम को पहले देखेंगे वो आपका इनकम है क्या। अगर इनकम है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अगर इनकम नहीं है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम कौन सा चीज है उसको जानने के लिए हमको कुछ क्राइटेरिया जानना पड़ेगा। उससे पहले हमको दो चीज जानना पड़ेगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू। व्हाट इज कैपिटल आइटम एंड व्हाट इज रेवेन्यू आइटम? बेटा रेवेन्यू आइटम, वो कैपिटल आइटम वो है जो आइटम नॉन रिकरिंग है, मतलब बार बार नहीं होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल आइटम। कैपिटल इनकम हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। जो नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होता है। सपोज आप एक घर खरीदे, बार बार घर खरीदते हैं क्या? नहीं, एक दो बार तीन बार खरीदते हैं लाइफ में, तो वो कैपिटल आइटम। जो नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होता है। रेवेन्यू आइटम्स आर रिकरिंग इन नेचर। अच्छा, घर खरीदना कैपिटल,
लेकिन घर का भाड़ा देना, रेंट देना, रूम रेंट हर महीने देना पड़ता है, इट्स ए रिकरिंग आइटम, सो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू आइटम। कैपिटल आइटम नॉन रिकरिंग होता है, रेवेन्यू आइटम रिकरिंग होता है। बेटा समझ में आएगा, जो आइटम बार बार होता है, रिपीट होता है, उसको कैपिटल आइटम बोलते हैं। कैपिटल आइटम दो तरह का होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू आइटम दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब मिलना, और रेवेन्यू पेमेंट। ओके, ऑल रेवेन्यू receipts are income unless they are exempted। इसका मतलब हमारा जितना रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब आपको मिल रहा है और रेवेन्यू नेचर का है, वो इनकम होगा। अगर वो इनकम नहीं है होगा, उसके लिए एग्जम्प्ट होना चाहिए वो। इसका मतलब इनकम टैक्स में कुछ एग्जम्प्टेड इनकम है। व्हाट इज एग्जम्प्टेड इनकम? एग्जम्प्टेड रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हम इनकम नहीं मानेंगे। इसका मतलब कोई भी रिसिप्ट तुमको मिला, वो रेवेन्यू नेचर का है, तुम देखना एग्जम्प्टेड इनकम में उसका नाम है क्या। अगर है तो वो इनकम नहीं है, अगर नहीं है तो इनकम है। इसका मतलब तुम्हारा रिसिप्ट आया दो तरह का। इनकम तो रिसिप्ट से बनता है ना, पेमेंट से तो इनकम नहीं बनेगा। रिसिप्ट मतलब मिलना। तो पहला टेस्ट करोगे रेवेन्यू है क्या, फिर देखोगे हाँ रेवेन्यू है तो इनकम होगा, फिर देखोगे एग्जम्प्टेड लिस्ट में है क्या। नहीं, एग्जम्प्टेड लिस्ट में है, नो इनकम। नहीं है तो इनकम। इसका मतलब ऑल रेवेन्यू receipts are income unless they are exempted from tax. Similarly, all capital receipt, all capital receipts are not income unless they are specified to be income। इसका मतलब कोई भी कैपिटल रिसिप्ट है वो इनकम नहीं होगा। ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स नॉट इनकम। कौन सा होगा? इफ स्पेसिफाइड देन ओनली इनकम। सो बाय नेचर जितना रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम है, लेकिन उसमें से कुछ एग्जम्प्टेड है, बाकी सब इनकम। बाय नेचर जितना कैपिटल रिसिप्ट है वो इनकम नहीं है, उसमें से कुछ इनकम है जो स्पेसिफाइड है। बेटा समझ में आ गया? रेवेन्यू रिसिप्ट का सब इनकम, कुछ एग्जम्प्टेड। कैपिटल रिसिप्ट का सब एग्जम्प्टेड, कुछ इनकम। ओके, अभी इनकम टैक्स इंडिया में बोल रहा है जिसका इनकम है वो अपना इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड करेगा। अपना इनकम को कितना पार्ट में डिवाइड करेगा? 5 पार्ट। क्या क्या 5 पार्ट? पहला पार्ट, सैलरी से कितना इनकम मिला है, सैलरी इनकम। बेटा सैलरी इनकम का मतलब क्या है? सैलरी इनकम मतलब तुम कहीं पर नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो तो
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है तो उससे जो इनकम आता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पैसा देता है एम्प्लॉय के लिए, वो सैलरी इनकम बनता है। फर्स्ट इनकम इज सैलरी इनकम। ये सैलरी इनकम को बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। These are the heads of income. What are the heads of income? First head of income is salary. Second, income from house property. बेटा तुम्हारा घर है, भाड़े पर है, भाड़ा से जो इनकम आता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसका मतलब तुम अगर किसी घर का ओनर हो और उससे पैसा आता है, उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तीसरा है, नहीं तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, उससे जो इनकम आता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम। इनकम फ्रॉम मतलब आइदर प्रॉफिट होगा या गेन होगा। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आइदर तुम्हारा बिजनेस होगा या नहीं तो प्रोफेशन होगा। बिजनेस मतलब दुकान होगा, प्रोफेशन होगा मतलब आइदर तुम लॉयर होगा, लॉयर का ऑफिस होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या हाथ देखने का काम करते हो, पामिस्ट हो, या हॉरोस्कोप पढ़ते हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड, वो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो पहला हेड्स ऑफ इनकम है सैलरी, दूसरा हेड्स ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड ऑफ इनकम है पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का मतलब तुम कोई कैपिटल एसेट बेचे हो, तुम कोई घर बेच दिए, उससे गेन हुआ, वो गेन टैक्सेबल हो। कोई कैपिटल एसेट सेल करके जो गेन आता है वो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन में। तुम्हारे पास किसी कंपनी का शेयर था, उसको बेच दिया, कुछ गेन हुआ, वो आएगा टैक्सेबल। तुम्हारा एक घर था, बेच दिया, वहां पर आएगा। कोई एसेट बेचकर जो इनकम गेन आता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। फिफ्थ, अगर कोई और है जो ये चारों में नहीं आया, उसको हम लास्ट हेड ऑफ इनकम में दिखाते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या आईओएस। व्हाट इज आईओएस? जो इनकम ये सब में नहीं आया उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फर्स्ट 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर हम ये सबको मिला देते हैं, जो इनकम आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या जीटीआई। बेटा समझ में आ रहा है व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आपका अगर इनकम है, आप वो इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सैलरी से कितना इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम, बिजनेस प्रोफेशन में कितना इनकम, कैपिटल गेन में कितना इनकम, और कोई है बाकी बचा हुआ, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सारा इनकम को मिलाकर आ गया ग्रॉस टोटल इनकम या जीटीआई। अभी ग्रॉस टोटल इनकम आपका आ गया। सपोज आपका ग्रॉस टोटल इनकम आया, उससे आपको लेस करना है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80CCC
टू 80U। 80C से 80U के अंदर में बहुत सारा डिडक्शन छूट है, वो छूट को माइनस करने से जो आता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। तो हर एक आदमी को पहले उसका टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? पूरा 5 हेड का इनकम को मिला देंगे, उससे डिडक्शंस माइनस करेंगे, जो आता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। फिर आपका टोटल इनकम को आप कंपेयर करेंगे मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। If your total income is greater than maximum exemption limit, then only you have to pay tax. अगर टोटल इनकम उससे कम है, you do not have to pay tax. The maximum exemption limit is mentioned in the budget every year. इतने तक टैक्स नहीं, फिर उसके ऊपर गया तो टैक्स शुरू होगा। सपोज आपका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट दिया हुआ है 3 लाख, कितना आया? 3 लाख। तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट सपोज है 3 लाख, आपका टोटल इनकम आया कितना? 4 लाख। टोटल इनकम है 4 लाख, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख। दिस इज टोटल इनकम एंड दिस इज मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। आपको टैक्स देना है या नहीं? देना है, क्योंकि आपका टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यू हैव टू पे टैक्स। नहीं, आपका टोटल इनकम आया 2.5 लाख, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 3 लाख, उससे कम है, तो यहां पर नो टैक्स। तो कौन से आदमी को टैक्स देना है? जिस आदमी का टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उसको टैक्स देना है। ठीक है, उसको उससे कम है तो टैक्स नहीं देना। कितने रेट पर टैक्स देना है? एट व्हिच रेट, कितना % टैक्स देना है? द रेट ऑफ टैक्स is mentioned in Finance Act every year. ठीक है, नॉर्मली आप एक साल में जितना इनकम करते हैं उसका टोटल करें। सपोज आपका 2025 में आप टैक्स निकालें, 2025 का टोटल इनकम का टैक्स कितना ऐड करेंगे? 5, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। फिर आपका निकलेगा जीटीए। जीटीए से डिडक्शन निकालना है, आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर देखेंगे वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है, अगर कम है आपको टैक्स नहीं देना है। 2025 का टैक्स आपको 2026 में देना है। तो 2026 का इनकम का टैक्स आपको 2027 में देना है। 2027 का टैक्स आपको 2028 में देना है। तो ये जो 2025 का टैक्स 2026 में देना है, तो ये जो 2025 में आपका इनकम हुआ, दिस इज इनकम अर्निंग ईयर। इनकम अर्निंग ईयर, इनकम अर्निंग ईयर मतलब आप किस साल में इनकम कमाए। कौन से साल में? 25 का मतलब क्या है? दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। 2025 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फर्स्ट
April 25 to 31st March 26। इसके बीच में आप जितना इनकम किए, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25 26 फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 25 26। इसका टैक्स आप कब देंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2026 का। तो उसको बोलते हैं टैक्स ईयर। व्हाट इज द टैक्स ईयर? 2025-26 का टैक्स ईयर 26-27 है। 2026-27 का टैक्स ईयर नेक्स्ट ईयर 27-28। सो आप जिस ईयर में टैक्स अर्न करते हैं उसके बाद वाले ईयर में आप टैक्स देते हैं। तो जिस ईयर में आप टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का दूसरा नाम है असेसमेंट ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? दिस इज टैक्स पेइंग ईयर या टैक्स ईयर। टैक्स पेइंग ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और इनकम अर्निंग ईयर को हमेशा वो टैक्स ईयर से पहले आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। दो तरह का ईयर समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? इनकम अर्निंग ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? टैक्स पेइंग ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से। कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च। दैट इज फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट का ईयर। हम लोगों का ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, गवर्नमेंट का ईयर अप्रैल से मार्च होता है। हमको गवर्नमेंट के ईयर के हिसाब से टैक्स देना है, लेकिन जिस गवर्नमेंट के ईयर में हमारा इनकम हुआ है उसको बोलते हैं इनकम अर्निंग ईयर या प्रीवियस ईयर। और जिस फाइनेंशियल ईयर में हमको टैक्स पेमेंट करना है उसको बोलते हैं टैक्स ईयर या असेसमेंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर को भी बोलते हैं टैक्स ईयर। अगर प्रीवियस ईयर 2025-26 है तो टैक्स ईयर होगा 2026-27 या असेसमेंट ईयर होगा। इसका मतलब इसका इनकम के ऊपर टैक्स इस साल दिया जाएगा। सिमिलरली 26-27 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट होगा 2027-28। इसका मतलब इसका इनकम के ऊपर टैक्स यहाँ पर दिया जाएगा, इसका इनकम के ऊपर टैक्स यहाँ पर दिया जाएगा एक साल बाद। 2027-28 का प्रीवियस ईयर का टैक्स ईयर कब होगा? 2028-29। टैक्स ईयर में टैक्स देना होता है, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाना होता है। पैसा कमाने वाला ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और टैक्स पेमेंट वाला ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एनी डाउट? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। ओके, अभी हम फाइनेंस ईयर तो दो तरह का है। ईयर पहले सिंपली समझो ईयर क्या है। ईयर का मतलब साल। साल दो तरह का है, एक को बोलते हैं हम लोगों के लिए कैलेंडर ईयर। व्हाट इज कैलेंडर ईयर? कैलेंडर में जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर।
ये गवर्नमेंट का ईयर होता है, गवर्नमेंट जिस ईयर को मानता है। ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर। इनकम टैक्स में ईयर वो का मतलब दो है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में दो तरह का ईयर है। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? इनकम अर्निंग ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्निंग फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? टैक्स पेइंग फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाया जाता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में, और जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेमेंट किया जाता है वो वाला इनकम के ऊपर, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एनी डाउट? कैलेंडर में जो ईयर होता है उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। गवर्नमेंट जो ईयर मानता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके। जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाया जाता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उस जिस फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का दूसरा नाम भी टैक्स ईयर भी बोलते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। इधर लिखोगे कैलेंडर ईयर इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके। हाँ, ये सिर्फ इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूं, हम इनकम टैक्स इंडिया में पढ़ते हैं, बाकी कहां पर क्या होगा उस कंट्री में समझेंगे। ठीक है, इंडिया में बोलते हैं। नेक्स्ट अभी मैं 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वो 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टैक्स इवेजन। एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, और एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग। बेटा तुम्हारा इनकम है 5 लाख, दुनिया में कोई भी आदमी टैक्स देना नहीं चाहता है। 2 चीज दुनिया में कोई करना नहीं चाहता, एक टैक्स देना, दूसरा भगवान के पास जाना। सब बोलते हैं भगवान मुझको उठा ले उठा ले, जिस दिन उठाने भगवान आएगा कोई जाएगा नहीं। कोई मरना और टैक्स देना नहीं चाहता है, बट दोनों रियलिटी ऑफ लाइफ है। टैक्स तुम दोगे और एक दिन मरोगे। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं टैक्स कैसे कम दे, टैक्स कैसे कम करे। सपोज तुम्हारा इनकम है 5 लाख, तुम उसको इनकम टैक्स में दिखाए नहीं मेरा इनकम 5 लाख नहीं है, मेरा इनकम 1 लाख है, तो टैक्स कम हो जाएगा या नहीं? कम हो जाएगा, क्योंकि आपका इनकम है 5 लाख रियल इनकम, बट योर रिपोर्टेड इनकम इज 1 लाख। सपोज इसका मतलब यू अंडर रिपोर्ट योर इनकम, तुम्हारा जितना इनकम है कम करके दिखाओ।
क्यों? टैक्स कम होगा। तो इसमें टैक्स कम होगा, लेकिन अगर पकड़े जाओगे झाड़ पड़ा जाओ। इसका मतलब दिस इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है? तुम कुछ ऐसा तरीका अपनाओ जिससे टैक्स कम हो, और वो इलीगल वे में कम, लीगल वे में नहीं। इट्स एन इलीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स। बहुत सारा लोग ऐसे करते हैं। बेटा जो बिजनेस करते हैं उनका दो चीज होता है, उनको टैक्स देना है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। बेटा सपोज तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट कैसे आएगा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। तुमको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है। बेटा तुम्हारा रियल इनकम 5 लाख है, रियल एक्सपेंसेस 4 लाख है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1 लाख। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना इनकम को कम करके दिखाते हैं, अंडर रिपोर्ट देयर इनकम। 5 लाख के बदले में क्या कर देंगे? 4,80,000। 4 लाख खर्चा है, कितना आया? 80,000। तो इट्स इलीगल। कुछ लोग क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं, 5 लाख का इनकम है, खर्चा 4 लाख हुआ है, 4 लाख को खर्चे को बढ़ाकर दिखा देते हैं, ये भी इलीगल है। अगर तुम ऐसा करते हो, टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन पकड़े जाओगे, झाड़ पड़ा जाओगे। ठीक है? इट्स ए टैक्स इवेजन इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? इफ यू डू टैक्स इवेजन, यू आर डूइंग ए क्राइम। If you do a crime, what will happen? You will be penalized, you will be fined, and you may be put behind the bar. तुम्हारे ऊपर पेनल्टी, फाइन लगेगा, और तुम झाड़ पड़ा भी जा सकते हो। टैक्स इवेजन, ठीक है? These are illegal way. These are unacceptable way of reducing tax. और दो तरीका है टैक्स को कम करने का, एक है टैक्स अवॉइडेंस और एक है टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग आर लीगल वेज, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूं। लीगल वे मतलब नो झाड़पड़ा, नो क्रिमिनल एक्टिविटी, इट्स नॉट क्रिमिनल। तुम क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तुम लीगल एक्टिविटी कर रहे हो। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? तुम जानबूझकर इनकम टैक्स में कुछ लूप होल ढूंढो और उसका बेनिफिट लेकर टैक्स कम करो। यू फाइंड सम लूप होल इन द इनकम टैक्स and get reduce your tax liability. आपण देखिछंती गुडा लोक अछंती एमती बोर्ड मरा हैथिबो, एठी बोर्ड मरा हैछि, एठारे परिश्रा करंतु नाही, सी आसबे एठी मुतिबे, एई जगह रे तांकर सब कार्य कम करी। कोन ना एठी बोर्ड मरा हैछि, म एठी करले कोन अछि, बोर्ड रो ये हैछि कि एटा सब गालुआ, एंग सब कोन कहते गालुआ, गालुआंक बारबाटी चाष जो नुहे, एटा सब गालुआ लोक। इनकम टैक्स कहूची, if you make any payment above 10,000, it should be in check. 10,000 बा ताटू अधिका पेमेंट करले चेक रे पेमेंट करिवो बा बैंक ट्रांसफर करिवो,
कैश रे करिवो नहीं मते तुमको 50,000 दबार अछि कोथे दबा कथा चेक रे कारण एटा 10,000 अधिका मु कोन करबी मुके भाई गोटे काम कर मंडे आसे मोठु नै जा 9,919 ट्यूसडे आसे नै जा 9,919 वेडनेसडे आसे नै जा 9,919 सब कैश रे थर्सडे आसे नै जा 9,919 फ्राइडे आसे 9,919 सैटरडे आसे नै जा 4 टंका टोटल हे गला केते 50,000 I make payment 50,000 I do not break any law but my intention is not good it's not illegal but it's immoral it's unethical tax avoidance is unethical but legal way of reducing tax. If you adopt tax avoidance techniques, nobody will put you in bar because you are not doing anything against the law, but your intention is not correct. You obey the law by letter, not by spirit. What is letter and spirit? When there is any law, what is written, that is letter. But why it is written, that is spirit. There are many people who obey the law by letter, but not by spirit. If you do any activity by which your tax is reduced, by obeying income tax laws by letter, but not by spirit, that is known as tax avoidance. It is not illegal, but it is immoral. Illegal no hai, it is immoral. It is an immoral activity. Illegal immoral भितर फरक जानि पछुंती illegal माने आपन को सीधा जेल immoral माने जेल के देबेनी ये तो लोक को हसा गुडा हेबे ओडा गालुआ लोगडा जेमती सुप्रीम कोर्ट वर्तमान लॉ देला extramarital affairs is not an illegal activity but it is an immoral activity. Extramarital affairs हेले आपन कहीं जेल नहीं जीवन आगवा थिला बर्तमान कहीं जेल नहीं परिवेन it is not illegal but in Supreme Court has told that it is not illegal but immoral. Immoral माने लोक आपन देखले बाजिए लोकटा चारटा स्त्री अछि ए धरी बुलुची एमती गुडा ता कहले टैक्स अवॉइडेंस बुझियला it's an illegal not illegal it's an unethical way of reducing tax but there are certain methods by which you can reduce your tax which is both ethical as well as legal. It is an ethical as well as legal way of reducing tax. केमती इनकम टैक्स एक्ट रे लिखा है ए काम कले तमरो टैक्स डिडक्शंस मिलिवो हमें से सब काम उडा करिवो याकू डोनेशन देले 100% डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट रे केते उडे एग्जम्पशंस अछि ए इनकम उडा को तम कमेबो जदी ताबे टैक्स नहीं नॉर्थ ईस्ट रे व्यवसाय कले तुमको टैक्स हॉलिडे मिलिवो टैक्स हॉलिडेज डिडक्शन एग्जम्पशन टैक्स हॉलिडेज 10 वर्ष जाए तुम ऊपर टैक्स नहीं आजीवन नहीं देयर आर सर्टेन रिबेट्स
there are certain reliefs which are mentioned in income tax. Income Tax Act itself tells that you do these activities and reduce your tax. Jemti apanakaro salary income अछि, जदि स्पेसिफाइड सेविंग करूचंती बैंक रे 3 वर्ष रो अधिका पैसा बांधुचंती बा कोनोसी गोटे म्यूचुअल फंड डेजिग्नेटेड इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड किनुचंती बा कोठी पैसा रखुचंती पीपीएफ रे पैसा रखुचंती 8CCC रे 1.5 लाख जाए छाड़ आपण 1.5 लाख टका रखिले आपण इनकम 1.5 लाख कमी गला इनकम टैक्स रे लिखा है जे आपण से कामटे करले एवं आपनकर टैक्स कमेले. That is known as tax planning. Every good citizen must reduce its tax through planning, not through evasion, not through avoidance. Am I clear? Tax evasion, tax avoidance, tax planning भितरे कौन फरक अछि बुझिउछि ना बुझिउ आपण क्वेश्चन बारंबार आसुछि differentiate between the three terms tax evasion, tax avoidance, tax planning. Evasion माने tax चोरी, avoidance माने tax को जानी सुनी ठकीबा. Tax चोरी गोटे, tax ठकीबा गोटे, आ गोटे tax planning, tax कमेइबा. Tax plan करिबा. बुझिला कि ताले आपण क्वेश्चन ने तीनटा पडिबो टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन आ टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स इवेजन कौन ऑल मेथड्स बाय व्हिच टैक्स लायबिलिटी इज इलीगली अवॉइडेड आर नोन एज टैक्स इवेजन. केमिति टैक्स इवेजन कुआ जाय नॉट शोइंग इनकम at its real level under disclosure of income, inflating expenses खर्च को अधिका देखेबा, manipulation of accounts, violation of rules regulation of law to save tax, manipulation of sale and purchase of property, benami transactions, hawala transactions. These are way of tax evasion. These are all criminal activity. Okay. Next, what are the reasons of tax evasion? Loko kain ठकंती? High rate of tax, complicated tax law, rampant corruption. These are certain reasons. Weak surveillance. Why people go for tax evasion? What is tax avoidance? Tax avoidance means reducing or negating tax liability in legally possible way, but not moral way. Your intention is malified with malified motive. If you obey the tax law, obey the law by letter, not by spirit, and reduce tax liability. Though legal, it is immoral. Though legal, it is unethical. Legal hele madhya ita unethical. Tax avoidance. Next one is tax planning. What is tax planning? Tax planning is both legal and ethical way of reducing tax liability. It is the legitimate right of the tax payer to plan his income. How you can do tax planning? You will take benefit of different deductions,
exemptions. Okay. You will take various benefit like deductions, exemptions, rebate, relief provided under tax law. It is legal and accepted by judiciary. This is known as tax planning. Need for tax planning. These are the cases. Limitation of tax planning, difference between tax planning and tax evasion, difference between tax planning and tax avoidance, difference between tax avoidance and tax evasion. I have discussed all those concepts. Okay. ठीक है. कार किछ पचारिबा अछि यदि पचार. Sir, ITR 3 or 2 रे हमें जो टैक्स एक्सेम्पशन गुड़ा देखंती एक्सेम्पशन ने सर यदि गोटे कंपनी पोस्ट के सिनारियो माने कर गोटे कंपनी एक्सेम्पशन देखै चली ची 3-4 वर्ष हला गवर्नमेंट किछि करूनी माने स्क्रूटनी होउनी आज नहले फ्यूचर हे पारे हां सेटा झारपड़ा जीवो एते बेला धरा पइले भी झारपड़ा जीवो तू कहबो मु 20 वर्ष तळे गोटे लोक को मारिथिली ए जाय स्क्रूटनी हेइनी जो दिन हबो से दिन धरा पड़िबो झारपड़ा जीवो कारण सेटा क्रिमिनल एक्टिविटी तुम जेते बेले करले भी मल्ला पूर्व जदि धरा पड़िबो तथापि झारपड़ा जीवो सर हमें जेतेबेले इनकम टैक्स फाइल करिया माने कर गोटे एंटिटी से इंडिया रे अछि आ फॉरेन रे भी अछि दीटा को माने तार गोटे विंग्स माने तार सिस्टर ब्रांच हो कि तंकर गोटे भारत माटी रे तार किछि अछि जदी ताको दबा को पड़िबो टैक्स सर मु कहूँ जदि मु गोटे किसी गोटे पॉलिसी नेली 12 लाख रो पॉलिसी गोटे नेछि एलआईसी हो बा अलगा किसी वे रे हो किसी गोटे पॉलिसी नेछि ता परे जदि मु किसी इनकम कली ता पई मते वॉइस आसला नाही कटि गला ठीक अछि वॉइस कटि गला से भाई करो ठीक अछि वॉइस कटि जाउछ ओके थैंक यू नेक्स्ट सर आसबे हम पढो सर एफडी इनकम टा कैपिटल गेन जाउछि कि सर नहीं एफडी रो इनकम टा इंटरेस्ट इनकम आईओएस जीवो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सर कैपिटल इनकम रे खाली जोटा शेयर टा बिकन सेटा खाली ना आ सर कोन आसी कर बिकिले गाड़ी बिकिले जो कैपिटल एसेट तमर कुछ एसेट ताको बिकिलो आगे ठीक है सर थैंक यू थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू सर थैंक यू सर अरे मु कहा को करबी सारा आसी ऑलरेडी सार को होस्ट करते नमस्कार सर नमस्कार सर जाओ आगे A very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. और tax planning, tax avoidance पढ़ुଥିଲେ very complicated area है भाई. Yes, sir. Oh, finance year हम पुणे economics को आसीबा ये भी गोटे आपनकर टेक्निकल एरिया एनी आज ती थ्योरी पढ़िया जो आपन को
cost का କିଛି ଯାଉ ଆମେ already 3ଟା module ସାରି ଦେଇଛେ 4th module ଆଜି start କରିବା ଏ 4th module ରେ basically ଆମର cover ହେଇଛି cost analysis ଆଉ market analysis ଆମେ demand analysis production analysis ସାରି ଦେଇଛେ ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଟିକେ about cost analysis. After that, tomorrow we'll go for the market analysis. Cost ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ production ପଢୁଥିଲେ, we discussed that cost is an integral part of the production process. बिना cost ରେ कौनसी production संभव नहीं. So जेहेतु producers माने are being engaged in the production process, they also have to indulge in analyzing the costs. कारण आमे production ने पढ़िले जे आज rational producer हमरो duality of objectives थाए. गोटे पटे आमे चाहो output टाको maximize करिया पे. On the other side, we want to minimize the cost. किंतु कम खर्चरे हमें अधिक output produce करिवा. So that से अधिक output को बिक्री करले हमरो revenue maximization हबो, which in turn will lead to maximization of profit. Cost minimization is considered to be an integral objective on the part of each and every producer. So for that, as a business decision maker, as a producer, we need to have some familiarity about the cost analysis, in which we'll try to first of all find out what cost is all about, particularly from the point of view of business or from the commercial point of view. Then we'll try to find out the different cost concepts, because knowledge on cost concept is highly essential on the part of every business decision maker, by using which they will try to minimize the cost. So they will जानना चाहिए कोई प्रकार cost सब रही थी, कोई cost बड़ा relevant, कोई cost बड़ा irrelevant, कोई cost को अपना manage कर ले, अपना cost को minimize कर करिए, ताले अपना कौन सी decision नहीं करिए नहीं. So for that, you need to be familiar with different cost concepts. So सेटा को आज हमें overall ये बुझिबा what cost is all about and what cost concepts are there which we need to be familiar with, so that it will help us in identifying what are the relevant costs, what are the irrelevant costs, and accordingly we can take some prudent decisions in our business. ମୁଁ ଟିକେ slides share କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So in normal circumstances, what is cost? We need to first of all understand the basic meaning of cost. We all know that every business has two sides. One is your income side, one is your expenditure side. And first of all, the business concerns have to look at the expenditure side, because only when they spend something on production, they can be able to produce output, by selling which they can generate income. So two sides of any business are there. One is income side, one is expenditure side. So cost basically represents the expenditure side of business. It have a producer point of view to business point of view to ଯଦି କନଜ୍ୟୁମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ର ମିନିଂ ଆସିଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, whatever we are spending in order to acquire something, either good or service, that spending itself is the cost for the consumer. Consumer ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ତାର cost. So from the consumer point of view, if a consumer is spending something to acquire something, then that's total spending for the acquisition of that particular thing
is known as your cost. But in terms of businesses, basically cost refers to the expenses incurred by the business concerns in the production process or in order to produce output. तो जो cost concept आसिला, a cost concept basically production में ही आसिला. Production में we discussed about the different inputs. हमें बहुत सारे raw material use करे, हमें labor भी use करे, हमें किसी other aspect मध्य हमारा production में रहे, जोड़ा कि directly production संगे involve ना होले मध्य indirectly involve था. कारण हमें suppose जिनसे produce करूँचे, तो ताकू production कला पर संगे संगे market को छाड़ू, ताकू stock करेंगे हमें godown में रखूँचे, warehouse में रखूँचे. तो warehouse पे हमें जो खर्च करूँचे, बा तारो preserve करिया पे ही product को जो खर्च करूँचे, और security guard ते ही warehouse रे suppose रखिए, तापे जो खर्च करूँचे, एवढा सब cost भीतर आसी. Similarly, business जेतବେଳେ run करूँची, production होऊची, जो मैंने सब administrative position में आसନ୍ତି, जो मैंने manage करते जिन सबको, although they are not directly involved in the production process, सेମାନଙ୍କୁ जो salary हमें दଉଛୁ, सेगुड़ा मध्य हमरो indirectly involve होऊची production भीतर. तो raw material हो, labor हो, किंबा other heads, that जोतरे हमें खर्च करूँची किसी पैसा, together they constitute the overall cost of production. So, as a managerial economist or as a business decision maker, we must have to have a clear understanding of the different cost concepts for clear business thinking and proper application. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି by the business concern, the business concern need to have some understanding on the different cost concepts. ये जो cost କଥା हमें कहूची, a cost is basically considered to be a thing which is largely influenced by the output level. कारण हमें कितने output produce करूँचे, ता ऊपर cost टा depend करूँ. हमें यदि अधिका output produce करीबा, definitely हमारा खर्च अधिका हो, तो cost बढ़ी जी. यदि कम output produce करूँचे, definitely हमारा खर्च कम जी. कारण हमें कम output produce करूँ. तो इठी जो cost कथा हमें कहले, cost टा को basically हमें show करी परचे through a functional relationship between inputs and outputs. अब इठी हमें कहूँचे cost is a function of both input as well as outputs. Input भीतर हमें नौचे कौन? All the inputs and the prices of inputs basically is forming the total cost of product. So here we have written that C is a function of SOPT, where S stands for the size of plant or the scale of operation. वो scale में हमें operate करूँचे, that scale ले करूँचे, जो scale ले करूँचे. Screen is not visible. Screen visible होगी? Yes, sir. Visible होगी तो? होगी. होगी ना होगी मतलब. Yes, sir. होगी. So here we have written that cost is a function of some inputs as well as outputs. If input रे सब प्रकार input का हमें नौची, जो ठीक है हमें P will जो indicate करूँचे, that P represents the prices of all inputs that are being used in the production process. T is referring to the technology, and technology रे भी हमें कोई सा खर्च करूँचे. S is the scale of operation, का large scale ले यदि हमें production करूँचे, हमारा खर्च अधिका हो. Small scale ले यदि production करूँचे, हमारा खर्च कम हो. तो scale of production ऊपर मध्य, का scale of operation ऊपर मध्य cost का dependence हो. तो ये जो functional relationship हमें देखेंगे, आज जो जितना हमें आशय आती है the basic nature of cost, particularly from the business point of view. So cost का हमें basically कहूँ जे ଗୋଟେ organization, ଗୋଟେ commercial organization which is being involved in the production process, either in the production of goods or in the production of services. When that organization basically spend money on different inputs for various purposes, the total monetary expenses incurred by the organization for various purposes constitute the cost. And for running any business, cost is considered to be essential. बिना खर्चे रे हमें कौन सी प्रकार
production କରିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର business କୁ ଆମେ ଚାଲି ପାରିବା ନାହିଁ business ଆମେ କରୁଛେ ମାନେ we must be ready to spend money we must be ready to incur costs so costs are essential for running of a business costs directly affect profits କାରଣ ଯଦି cost ଅଧିକା ହବ ଆମର profit margin କମି ପାରେ cost କମ ହେଲେ ଆମ profit margin ବଢି ପାରେ ତେଣୁ profit କୁ directly affect କରିବ डिपेंड करूची जे हमर कॉस्ट ता अधिका रहउची कि कम रहउची कारण बहुत गुटे फैक्टर अछि जोडा कि कॉस्ट को अफेक्ट करि पारे सिमिलरली कॉस्ट इन्फ्लुएंस प्राइस कारण जदि हम खर्च अधिका करूचे हमको अधिका प्राइस रे बिक्री करिया पड़िबो किंतु मार्केट रे जतला हम जाउची हमर कंपटीटर अछंती तो कंपटीटर प्राइस को हम कंसीडरेशन नबा पड़िबो से अनुसार जदि हम प्राइस कमे दोची वी हैव टू फेस विथ लॉस कारण खर्च अधिका आइची तेणु जदि खर्च अधिका आइची वी नीड टू रिकवर द कॉस्ट So for that, जेतला हम प्राइसिंग डिसीजन नो we also take into consideration the concept of cost. And cost ता सब बड़े हमर monetary terms से express हेता है and ये जो cost को था हमें कहू जे बिजनेस रे हम जो इनकर करू जे जो cost बा जो expenses था एटा सब बड़े constant न थाए it's not a static concept it goes on changing with the passage of time so over time the costs vary because of many factors like inflation, market condition, and changes in production process. यदि inflation हे गला तो automatically आपनकर सब जिनसर प्राइस ता बढ़ी जो so से रॉ मटेरियल हो से लेबर हो से जहां भी सब तर प्राइस बढ़ी तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अनुसार बढ़ी तो आप गोटे खर्च करिए बिली चिंता करि जाउछन हठात मार्केट रे इन्फ्लेशन हैला तो अकॉर्डिंगली सब जिनसर प्राइस बढ़िला तो आपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ी और कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट कथा हमें कहूचे जेहेतु एटा को हम कहले इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ बिजनेस इट इज कंसीडर्ड टू बी एन आउटफ्लो ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस सो इट इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए बिजनेस तेणु गोटे हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू रे देखियो यदि हम कंज्यूमर रो कॉस्ट कथा कहूचे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर ए कंज्यूमर दैट मींस how much the consumer is supposed to pay for that product. So generally the cost represents an outflow of money. तापरे हम आसी दिबा cost concept. कारण हम कहले जे we need to be familiar with different cost concepts so that we can be able to take some prudent decision with the help of those cost concepts. तो cost concept विषय यदि न जानिबा को cost ता कोन हमें यदि न जानिबा ताले related to cost and decision ना बहुत कष्ट है So for that, हम केतोटे क्लासिफिकेशन कॉस्ट रो करिछु या भी खर्च होउची ओडे बिजनेस रे तार डिफरेंट क्लासिफिकेशंस अछि तो एठी I have shown some classification of cost depending on the behavior or the variability. तो फर्स्ट हमरा आसुची फिक्स्ड कॉस्ट so जहां भी खर्च हम करूचे all the expenses are actually being turned in two terms. One is your fixed cost, one is your variable cost. And production and in the short term में हमारे किसी fixed factor रोची, किसी variable factor रोची, long run में भी हमें जो plan basically use करते, इधर long term में use करते, जो capital assets हमें use करते, capital asset उड़ा long term में use करते. तो सेतरे हमें जहाँ खर्च करी चे आरंभरू, आउ किसी अधिका हम करिया पुनी, कारण already हमें खरीदी. कारण से मेशिनरी बा से कैपिटल रो गोटे लाइफ पीरियड अछि सेही जाय हमें ताको यूज करि करबा तो ऑटोमेटिकली जहां भी कॉस्ट बा जहां भी एक्सपेंडिचर इनकर करा जाय बाय एनी बिजनेस इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेजर हेड्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर और वेरिएबिलिटी वन इज योर फिक्स्ड कॉस्ट वन इज योर वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट ता कोन द फिक्स्ड कॉस्ट होची कॉस्ट व्हिच डू नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट आपण आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाउछंती कि प्रोडक्शन कमाउछंती that doesn't matter if that doesn't affect the cost but that means the आपनकर cost ता कोनोसी बेरे भी चेंज होनी आउटपुट बढ़िले भी सही सेम कॉस्ट रहउची आउटपुट कमिले भी सही सेम कॉस्ट so here cost is independent of the output so if a cost which do not change with the production or sales volume then that cost is known as your fixed cost এটা সববেলে আপনাদের কনস্ট্যান্ট রহিব রিগার্ডলেস অফ হাউ মাচ অর হাউ লিটল ইজ
produced केते अधिक production କରୁଛନ୍ତି केते कम production କରୁଛନ୍ତି ता उपरे ए cost टा dependent हुए एटा throughout the production process आपनकर fixed रहयो so production संगरे यार कोनोस प्रकार relationship नाही it is independent of the production of output that means these costs do not change with the change in output suppose आपण ଗୋଟେ factory କରିଛନ୍ତି factory ରେ ଆପଣ production କରୁଛନ୍ତି तो ନିଜର ଘର ନାହିଁ suppose ଆପଣ ଭଡା ନେଇକି କରିଛନ୍ତି factory ଟା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ rent ଟା ଦଉଛନ୍ତି तो rent ଟା ଆପଣଙ୍କ production ସାଙ୍ଗେ related ନୁହେଁ ଆପଣ ଅଧିକ production କରୁଛନ୍ତି କମ production କରୁଛନ୍ତି rent ଯାହା fix ଆପଣ କରିଛନ୍ତି owner ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସେତିକି ହିଁ rent ଆପଣ ଦେବେ कि 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ agreement କରିଥାଇ ପାରେ over that period ଯାହା ବି rent fix ହେଇଥିବ ସେଇ rent ଟା ଆପଣ ଦେବେ ଏଇ period ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ production ବଢଉଛନ୍ତି କି production କମଉଛନ୍ତି ସେଇଟା affect କରିବନି rent ଆପଣ ସେତିକି rent ହିଁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ so whether you produce 10 units or 10,000 units you still have to pay the same rent every month similarly ଆପଣଙ୍କର administrative କାମକୁ manage କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର କିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁ ନୂଆ ନୂଆ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ପାଇଭଟାଲ ପୋଜିସନରେ ନେବେନି ସପୋଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିକି ନେଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କରିକି ନେଲେ ତ ଆମର ଗୋଟେ କନଫାଇନ୍ଡ ୱାର୍କ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଲାରୀ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏତିକି ସାଲାରୀ ଆମେ ମାସକୁ ପାଇବୁ तो ସେଇ ସାଲାରୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ୱିଥ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସାଲାରୀଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରୁଛି ବିଜନେସ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓନର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ବେସିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟରେ ଯିବ So even if production increases or decreases, the employees who are on a fixed salary, they get paid the same amount. It is a fixed cost. There is a variable cost. It is just opposite of fixed cost in the sense that these costs basically change with the change in output. जदि आपण प्रोडक्शन चेंज करछुंदी आपण देखछुंदी जे आपनकर कॉस्ट टा चेंज होउछ प्रोडक्शन बढ़िले कॉस्ट बढ़ी जाउची प्रोडक्शन कमिले कॉस्ट कमी जाउची तले सेही प्रकार कॉस्ट को हमें वेरिएबल कॉस्ट बोली कहबा the cost that changes with production or sales volume so more production higher cost less production lower cost so the production ऊपर डिपेंडेंट होची आपनकर कॉस्ट टा so जोटी कॉस्ट टा डिपेंडेंट ऑन टोटल प्रोडक्शन which means if total production increases cost increases or total production decreases cost decreases তাহলে সেই জায়গায় সেই কস্ট কো আমি কইছি ভেরিয়েবল কস্ট তার एग्जांपल আমি কোন নবা না আমি তাহলে প্রোডাকশন করুছি যে ইনপুট আমি ইউজ করুছি লেটস সাপোজ র ম্যাটেরিয়াল আমি ইউজ করলে কিছু তো অধিক প্রোডাকশন করলে আমার অধিক র ম্যাটেরিয়াল দরকার তেণু যে খরচটা আমি র ম্যাটেরিয়াল করুছিলি যেহেতু আমি প্রোডাকশনটা বঢ়াইলে অধিক র ম্যাটেরিয়াল ইউজ করিবা সো উই হ্যাভ টু স্পেন্ড মোর সো এক্সপেন্সেস অন র ম্যাটেরিয়ালস এটা আপনাদের ভেরিয়েবল কস্ট ভিতরে আসে suppose example আমি নও যে বেকরি দিনକୁ 100 কেকস বা প্রিপেয়ার କରୁଛି जो केक प्रिपरेशन पे जरा फ्लोर दरकार सुगर दरकार एग्स दरकार तेणु जदि एटा 10टा केक प्रोड्यूस करूची द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिक्रीजेस 100 केक रे तार जेति की खर्च हेई थांता इनपुट रे जदि से 100 केक को कमी दोची तार प्रोडक्शन कमी दोची 50 केक की 40 केक की 60 केक करूची तो जगह तार कॉस्ट मध्य इनपुट कॉस्ट मध्य कमी जी सेते हम रॉ मटेरियल ऊपर जो खर्चटा करूचे सेटा वेरिएबल कॉस्ट आसी Similarly, machines जदि यूज करके हमें प्रोडक्शन करूचे आपण जानथिबे आजिकली का मॉडर्न डे machines are not running on their own for running of any machine electricity is required और electricity consumption ता डिपेंड करছে आपण केते कंजप्शन करूचे हे अनुसार आपनकर यूनिट प्राइस सब रहिছে तो जदि अधिका कंजप्शन करिवे आपण हायर रेट रे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देबे कम कंजप्शन करछंती लोअर रेट रे आपण जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर मशीनरीज जोड़ा जो खर्चटा हम करूचे ऑन पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द मशीन्स दैट वी आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस जदि हम प्रोडक्शन बढ़िला the machines are supposed to be used rigorously and accordingly the electricity charges will be charged at a higher rate because more electricity will be used. If they run less, then automatically the electricity bill
decreases. এটা হলো variable cost হবে। যদি তার এটি আপনারা দেখিবে pictorial representation total fixed cost আর total variable cost fixed cost আমি কইলে remain fixed throughout the production process আরম্ভରୁ ଯାହା ଥିବ even if the production has not started whatever is the fixed cost it remains the same throughout the production process মানে x axis ରେ ଆମେ suppose output units ନେଇଛେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 0 ୟୁନିଟ ରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି 10 ୟୁନିଟ୍ସ ରେ ବି ସେମ୍ ଅଛି 20 ୟୁନିଟ୍ସ ରେ ବି ସେମ୍ ଅଛି 30 ୟୁନିଟ୍ସ ରେ ବି ସେମ୍ ଅଛି 40 ୟୁନିଟ୍ସ ରେ ବି ସେମ୍ 10,000 ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ସେପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିଲେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ ବଢିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଲେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ କମିବ ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କିଛି ହେଇନି ଆମର ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ 0 ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ଅରିଜିନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ହେଲା ଆର ବେସ୍ ଟା ଅରିଜିନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି and with the increment in output ଯୋଠି 0 ରୁ 10 କୁ ଗଲେ 10 ରୁ 20 କୁ ଗଲେ 20 ରୁ 30 କୁ ଗଲେ 30 ରୁ 40 କୁ ଗଲେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ବଢି ବଢି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ ବଢି ବଢି ଯିବ ତ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଆସିବ এটা ହେଲା ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି କୁ ବେସ୍ କରି ତେଣୁ ଓଭରଅଲ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ ରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଗ୍ରିଗେଟ କଲେ ଇନଟୁ ଟୁ ବ୍ରଡ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ वन इज योर फिक्स्ड कॉस्ट वन इज योर वेरिएबल कॉस्ट बट जो फिक्स्ड कॉस्ट কথা କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି କଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି by जो वेरिएबल कॉस्ट कहले ता भितर मध्ये बहुत गुडे कॉस्ट कंपोनेंट आसुची on which we need to have some idea have some familiarity तो सेकंड वे रे हम जेतले कॉस्ट को क्लासिफाई करूछु we are basically trying to classify the cost on the basis of managerial decision जेतले हम डिसीजन नबा को टाइप रो कॉस्ट को कंसीडरेशन को नबा कोटा को नबा बा को टाइप रो कॉस्ट अछि जहार इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग ऊपर पडुची को टाइप रो कॉस्ट अछि जहार इंपैक्ट decision making upre पडुनी so on this basis I mean cost को classify करछु into different categories first category हम नछि sunk cost sunk माने कोन बुझछन शिप जाउची हम कहू सिंक डाउन माने बुडी जीवा एठी होची ए कॉस्ट जदी बुडी जाईछ माने कॉस्ट which has already been spent and there is no opportunity to recover this cost कॉस्ट को आपण रिकवर कर परिबे नै ऑलरेडी खर्च हो गई तो सम कॉस्ट हमें कहूचे काहाकू ना ए कॉस्ट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट बट एट द सेम टाइम व्हिच कैन नॉट बी रिकवर ताको हमें रिकवर कर परिबे नै ऑलरेडी खर्च कर दैछे किंतु को कोन से रिकवर कर परिबा नाही तो जेत हमें रिकवर कर परिबा नै तेनो फ्यूचर पय जो डिसीजन नबा सेतरे सम कॉस्ट रो कोन से रोल नै therefore the concept of sunk cost should not affect the future decisions. In an example, I mean, suppose a company spends 2 lakh rupees on advertising a product. Advertisement आपनो product को launch कला पूर्वरु करूछंती product को market को छाड़िया पूर्वरु करूछंती advertisement जेतले करिवे for the purpose of promoting the product आपण पैसा खर्च करिवे advertisement रे आपण पैसा खर्च कर दिले but unfortunately advertisement ता appealing हैला नाही कंज्यूमर न आपण ऑब्जर्व कले जे मो पैसा खर्च करके एडवर्टाइजमेंट ता कली किंतु लोक माने एडवर्टाइजमेंट रे सेटा अट्रैक्टेड हेले नाही तो कॉन्सिक्वेंटली जदि प्रोडक्ट आपनकर फेल करे त लोक माने जदि अट्रैक्टेड न होले ताकर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल नॉट बी देयर तो आपण जति डिमांड एक्सपेक्ट करसले सेति डिमांड आपण पाइले फॉर योर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट फेल करि गला जदि प्रोडक्ट फेल करि गला जो खर्च त आपण एडवर्टाइजमेंट रे करिसंती से खर्च त आपण रिकवर कर परिबे ना ऑलरेडी सेटा स्पेंड हे जी तेरे जो 2 लाख टका हम खर्च करले ऑन एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट where the product later on becomes unsuccessful in the market so that 2 lakh rupees is a sunk cost because it cannot be recovered and future decisions should not be based on it. So future पे हमें जो decision नौचे as a decision maker सेठी हमें sunk cost को consideration को नबा नहीं सेटा हम पे cost में कहाँ से बुड़ी गला से पैसा बेले बेले कोन होई कि सपोज आपण ओटे प्रोडक्ट तयारी करछंती आपण भाबिले जे मो आपु ऑनलाइन सेल करिवि ऑनलाइन मार्केटिंग करी ऑनलाइन सेल करी तो सेति पे आपण ओटे सर्वर तयारी करछंती किबा ओटे कोन ऐप तयारी करछंती का कोटे देले पैसा खर्च करले किंतु बाय द टाइम सर्वर तयारी हे के आसला को आपण रियलाइज करछंती जे
ନାଇଁ ଅନଲାइन ରେ କଲେ ମୁଁ ଏଟା सक्सेसफुल हेबिनी मते ऑफलाइन जवा पड़े मु ए एरिया भितर मोर प्रोडक्ट को सेल करबी तो जो पैसा ऑलरेडी खर्च कर दैछंती सर्वर तयारी करिले कि जोटा दे दैछंती थर्ड पार्टी को आपण से पैसा रिकवर कर परिबे नै ऑनलाइन मार्केटिंग पे आप डिसीजन नहीं परवर्ती स्टेज रे आपण डिसीजन चेंज करी क्वेश्चन नै ऑफलाइन मार्केटिंग करबी तो सेति पे जो खर्च कर दैछंती ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केटिंग सेटा आपण रिकवर कर परिबे तो सेही पैसा को आपण कंसीडरेशन को नेबे जेतले प्रॉफिट देखिबे कि प्राइसिंग डिसीजन नेबे ए सम कॉस्ट को आपण कंसीडरेशन को नेबे कारण से कॉस्ट बुडी गेला सेटा आपण केबे हेले फेर पेबे नै so we need to have some familiarity about this concept of sunk cost तो आरो यदि हमें डेफिनेशन देखुचे कहउची कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड बाय पास्ट एक्शंस और इकोनॉमिक implications होची जे इट इज नॉट रेलेवेंट टू फ्यूचर डिसीजन सो एटा होचे इरेलेवेंट कॉस्ट तो आपन आइडेंटिफाई करिया पड़े ना कोटा रेलेवेंट कोटा इरेलेवेंट सेही अनुसार अपन डिसीजन नेबे तो ई सम कॉस्ट अपन रोटे इरेलेवेंट कॉस्ट जे कोनोसी फ्यूचर इकोनॉमिक डिसीजन पई दिस कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट हैना तो जदि अपन सपोज $200 स्पेंड करछन टू रिप्लेस वाटर पंप लास्ट ईयर नॉट रेलेवेंट इन मेकिंग सेलिंग डिसीजंस इन द फ्यूचर तो सेटा को सेल करिया को जरूरी एटा आरसी सेंस रहइबो सेकंड टाइप रो कॉस्ट आसुची व्हिच इज रिलेटेड टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपर मध्ये हमरा आईडिया नहीं है दरकार वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल अबाउट बिकॉज इन द कॉस्ट एनालिसिस दिस type of cost or this concept of cost plays an important role particularly in the decision making process opportunity ए जो word रहिछि एटा कोथरु आसुछि एटा आसुछि जे जेतले हम किछि खर्च करूछि गोटे पर्टिकुलर पर्पस पे हम खर्च करूछि पर सेही खर्चटा could have been done for some other purposes तार अल्टरनेटिव एवेन्यूज अछि जोतरे हम से खर्चटा करि परि थांते तो जदि हमें डिसीजन नौचे गोटे पर्टिकुलर पर्पस पे हमें पैसा खर्च करिबा दैट मींस वी आर सैक्रिफाइसिंग द यूज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर अदर रिलेटेड पर्पसेस सो वी नीड टू assure ourselves that जो पर्टिकुलर पर्पस पे हमें पैसा खर्च करले सेही पर्टिकुलर पर्पस रो जो मैक्सिमम रिटर्न हमें पाइबा that should be more than the return that we would have got if the money had been spent on other avenues. तो सेति पे एटा को हम कहूछु जे जो opportunity cost it is basically considered as the cost for the next best alternative use. Cost for the next best alternative use. It is the benefit which is lost when choosing one option over another. गोटे पर्पस पई जदि आ गोटे पर्पस को आपण रिप्लेस करूछंदी आ गोटे पर्पस को आपण इग्नोर करूछंदी ताहले आपण किसी बेनिफिट लूज कर ए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांसेप्ट कहले एटा डिसीजन मेकिंग रे बहुत इंपोर्टेंट कारण आमी जो खर्चटा करूजे हमको सेठी कंसीडरेशन ना पड़े जे खर्चटा जदि हम अलग जगह करथन हम कोन रिटर्न पाइथा अधिका पैसा ना कम पैसा जदि कम पैसा दे तले हम डिसीजन ठीक अछि जदि हम देखा जे अदर एवेन्यूज रे खर्च करथले हम अधिका बेनिफिट पाइथांती ताले हम डिसीजन रा भूल अछि तो डिसीजन मेकिंग रे आर इंपोर्टेंट रोल रहै you must have to assess the opportunity cost while taking some decisions because this concept of opportunity cost help in making the best decision among alternatives सेति पे मैं आपको कहली cost for the next best alternative or cost of foregone alternatives suppose आपण 50000 टका इन्वेस्टमेंट करछन करिया को अछि आपण you are planning to invest 50000 rupees आपण को पाखरे दीटा ऑप्शन अछि एटा हमें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू लेले इन जनरल जदि हम बुझिबा तले ए कॉस्ट सब थी संगे राटा ठीक अछि तो 50000 रु सपोज आपण देखिले जे इन्वेस्टमेंट आइदर स्टॉक मार्केट रे आपण करि परंती किमा फिक्स्ड डिपॉजिट रे करि परंती जदि स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करूछंती से 50000 ऊपर आपण रिटर्न पाइबे 10000 टका जदि फिक्स्ड डिपॉजिट रे करूछंती ताले से 50000 ऊपर आपण 5000 रिटर्न पाइबे किंतु एठी गोटे जिंस आपण कंसीडरेशन नवा पड़िबे जे स्टॉक मार्केट रे जदि इन्वेस्टमेंट करियो मु जदि 50000 इन्वेस्टमेंट करा जाउची सेठी रिस्क फैक्टर मध्ये साइमल्टेनियसली अधिकार होची
कारण स्टॉक मार्केट इज ए volatile market. केतବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିବ nobody knows that. କାରଣ ଏଟା डिपेंड କରୁଛି some external on some external factors. तो एठी ଆମେ କେବଳ ଯଦି ମନିଟାରୀ କନସେପ୍ଟ କୁ କନସିଡରେସନ ନବା ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ପାଇବା ଆଉ फिक्स्ड डिपॉजिट रे ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ करते 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ପାଇବା जदि आपण दीटा का ऑप्शन भितर गोटे ऑप्शन चूज कले लेट्स सपोज आपण फर्स्ट ऑप्शन टाको चूज कले नै मो स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करबी तले हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज 5,000 रुपीस तो जेहेतु आपण स्टॉक मार्केट रु 10,000 पाउछंती where 10,000 rupees is more than 5,000 rupees therefore your decision to invest in stock market is a right decision कारण एठी आपण रिटर्न टाको मैक्सिमाइज करूछन 5,000 जगह 10,000 पाउछ जोटी कि 10,000 इज मोर देन 5,000 रुपीस होला सेति पई बिजनेस रे मध्ये जेतेबेले आपण खर्च किछि करूछंती यू मस्ट रिमेंबर दैट द एक्सपेंसेस वुड हैव बीन मेड फॉर सम अदर पर्पसेस यू आर जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर अदर पर्पसेस फॉर योर ओन पर्पस so therefore you need to ascertain whether you are going to get the maximum benefit out of the decision which you are taking or not. That means जो purpose पे आपण investment करूछंती सेही purpose रू आपण maximum benefit पाउछंती ना नहीं as compared to the benefit that you could have got from other options. That is the reason why the concept of opportunity cost is much more important from the decision making point of view. That type of cost is incremental cost or differential cost. Incremental concept हम कहथिली marginal concept है आपण additional production करूछंती तो suppose ए जो incremental cost কথা हमें कहूचे it is nothing but the difference in cost between two alternatives केते आपनकर differential cost रहउची केते आपनकर incremental cost रहउची एटा लास्ट केस रे हम देखले differential cost by incremental cost आपनकर 5,000 कारण स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट कले 10,000 पाउछंती रिटर्न आ फिक्स्ड डिपॉजिट रे कले 5,000 रिटर्न पाउ तो सेठी incremental cost का आस्ते आपनकर 5,000 so it is the difference in cost between two alternatives and it is also used for decision making purposes suppose as a company you are into the production process and you can produce 500 units for 2 lakh rupees at the same time आपण देखुछन जे जदि आपण प्रोडक्शन बढ़ेबे 500 से 600 यूनिट को जाउछन you can produce 600 units for 2,40,000 rupees तेणु जो 500 से 600 यूनिट जो गले ए एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करिया पे आपण केते एक्स्ट्रा खर्च करछन जोटी की मार्जिनल कांसेप्ट आपण राछ कारण आपण को सेति की मिनिमम रिकवर करिया को पड़िबो बाय सेलिंग दो एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो एठी यदि आपण डिफरेंशियल कॉस्ट बाहर करिया को चाहू फॉर द 100 units extra that you are supposed to produce then you can find it by deducting 2 lakh rupees from 2,30,000 rupees which is equal to 40,000 so that is the differential cost incremental cost रो मध्ये गोटे बहुत इंपोर्टेंस रही in the decision making process जेतले हमें कोनोसी डिसीजन नउची related to production related to cost we need to take into consideration the incremental cost concept or the differential cost concept then fourth category is our imputed cost or notional cost या हम को इटा एमती टाइप रो कॉस्ट जोटा कि आपनकर खर्च हेई पारे थांता किंतु एक्चुअली खर्च हेई that means expenses which could have been spent but actually have not been spent suppose आपनकर पाके स्किल अछि आपण निजर कंपनी करूछन and you want to manage your own company you don't want to employ any manager for your company because you know you have that skill to manage your company तो ऑटोमेटिकली जेतले आपण निजे कंपनी को मैनेज करछन निजे कंपनी रो मैनेजर हिसाब रे काम करछन you are not supposed to pay yourself the managerial salary तो सेटा को हम बेसिकली कहू imputed cost or notional cost किंतु जेतले आपण कॉस्ट एनालिसिस करूछंती खर्च कोन अछि एटा जदियो आपन पॉकेट रु खर्च जाइनी किंतु हेई पारि था
जदि आपण गोटे मैनेजर को रखी थांते आपण ताको निश्चित रूप सैलरी देई थांते जेहेतु आपण पाखे स्किल अछि आपण निजे ओनर निजे निजको सैलरी देबे ना किंतु से सैलरी पे आपनकर खर्च हेई पर थांता जदि अलगा को मैनेजर को आपण रखी पर थांते और एल्स यू कैन थिंक इन द अदर वे जेहेतु आपण पाखे स्किल अछि आपण निज कंपनी निजे मैनेजर हिसाब रे अछि सैलरी नो नांती किंतु सेही स्किल को जदि आपण अन्य का पे यूज करथांते अन्य को कंपनी यूज करथांते जोटी आपण मैनेजर हिसाब रे रखा हेता ना आपण किसी सैलरी पाइथा आपण सेटा को फॉरगो करूछ तो इनपुटेड कॉस्ट हम बेसिकली कहू द कॉस्ट व्हिच आर सपोज्ड टू बी व्हिच आर नॉट actually paid but which could have been paid. Suppose a person runs a family business and doesn't take a salary. जोटा मैं कहले if they work elsewhere they could earn 50,000 per month. So this 50,000 is an inputted cost, the cost of not taking an external job. तो जेतेबेले आपण cost analysis करूछंती जेतेबेले आपण pricing decision नेबे for internal purposes you need to take into consideration this cost. ए खर्चटा हेई परि थांता जदिओ हेइनी कारण मु निजे मैनेज करूची बट एटा हेई परि थांता रियल प्रॉफिट जदि आपण जानिया को चाहउछन ताले एई इनपुटेड कॉस्ट को आपण कंसीडरेशन नबाक पड़िबो परवर्ती स्टेज रे हम एटा देखियो जे एटा मध्ये आपकर इम्प्लिसिट कॉस्ट बिल हम ताको तापर आछि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट माने पॉकेट बाहर केते गल जोटा एक्चुअली आपण खर्च करछन कोथरे खर्च करछन ना आइदर कैश रे हो किबा कैश इक्विवेलेंट रे हो तो बहुत गुडे जगह अपन देखिए कंपनी पाखरे किछि कंटिजेंसी रही थाए जोटा कि कंटिजेंसी पीरियड आसिले माने सेइथु खर्च करन तो कैश हो कैश इक्विवेलेंट हो माने रखि थांती सेटा खर्च करंती एटा कंपनी रो फाइनेंस को डायरेक्ट इंपैक्ट करे सपोज गोटे कंपनी लाख टका स्पेंड करूची ऑन एम्प्लॉय ट्रैवल फॉर बिजनेस मीटिंग आपन को बाहर को पठेबो कोनोसी मीटिंग पई कॉर्पोरेट मीटिंग पई आपन को जीवा आशा खर्च रहइहा खर्च सब कंपनी दियो कंपनी हाथ रो पैसा ता गला ना so that is why it is termed as out of pocket costs एटा कंपनी रो फाइनेंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर then shutdown cost एटा बेसिकली शॉर्ट टर्म ने आपन को आसीबो जदि आपन बिजनेस शटडाउन कॉस्ट करिया को चाहू छंती ताहले ताबे कोन आपन को एक्स्ट्रा खर्च रहउछ सो बेसिकली इट रेफर्स टू द कॉस्ट दैट स्टिल नीड टू बी पेड इवन इफ ए बिजनेस टेम्पोरली स्टॉप्स ऑपरेशन तो एटा बेसिकली हेल्प करे जे हम बिजनेस को शटडाउन करिवा ना कंटिन्यू करिवा सपोज आपन को निया लागि गला गोटे छोटिया रेस्टोरेंट करसले निया लागि गला तो जे पॉइंट आपन को ताको रिनोवेट न करि छंतु तो पॉइंट आपन को ऑपरेशन बंद रहे तो जदि आपन को शटडाउन हे गला गोटे टेम्पोररी पीरियड पर किंतु से जगह रे आपन जो भड़ा नै की करछंती ओनर को तो रेंट देबो जेति की मिनिमम स्टाफ आपन को अछंती को तो किछि पैसा देबे तांको तो कहबे जे किछि पैसा हम तुम देबे 3 मास से चली गेन कारण से आपन स्टाफ अछंती तो एई गुडा को बेसिकली कहू शटडाउन को जदि कंपनी शटडाउन होउची ताले शटडाउन हबा पूर्वरु जो टेम्पोररीली आउट ऑफ ऑपरेशन रहउची तापे कोन प्रक्रिया करिया पूरा कहली जदि निया लागि गला है आपन कंट्रोल नै है ना तो ऑटोमेटिकली से जगह रे आपन को जो माने स्टाफ ले विदा कर देबे नै तो पड़ा मोर 3 मास बंद हो तो आगु दे ओना रखिबे मे बी जहां सैलरी दोथले ताठु टिके कम दी पड़ा किंतु किछि पैसा दे अपन रखिबे किंतु गोटे जगह अपन देखुछु जे एका 2-3 मास रो सैलरी हेई गले मास को दिया होछि 2 मास बंद हला मास को सैलरी आ पछरे एडजस्ट ऑपरेशन हो तो सेही जिन सोडा को हम कहू शटडाउन कॉस्ट तो जो एठी हम जो एग्जांपल नेले सपोज गोटे फैक्ट्री 3 मास पे शटडाउन हैला किंतु ताको फैक्ट्री रेंट से 3 मास रो दवा को अछि 1,50,000 टका ताको मिनिमम स्टाफ सैलरी दवा को अछि 50,000 रुपीस सो इन टोटल 2 लाख रुपीस जो हे गला एटा धर शटडाउन कॉस्ट हिसाब से आसीबे और मार्जिनल कॉस्ट जोटा इंक्रीमेंटल कॉस्ट पड़थले इंक्रीमेंटल कॉस्ट रे हमें एट ए टाइम बहुत एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करथले एठी यदि गोटे सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करूचे ताहले
आमे केते खर्च करूचे तो marginal cost is nothing but the cost of producing an extra unit of output 100 यूनिट प्रोड्यूस करथले बर्तन 101 यूनिट प्रोड्यूस करे से 101 यूनिट प्रोडक्शन में केते खर्च हो सेटा को मार्जिनल कॉस्ट बोले तो मार्जिनल कॉस्ट रो इंपोर्टेंस एथि पे रहै छी जे जेते हम मार्केट रे प्रोडक्ट बिक्री करिया को जितने वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस मार्जिनल कॉस्ट कारण हमहु से मार्जिनल कॉस्ट रिकवर करिया अछि सेति के एडिशनल कॉस्ट हम बियर करूची so we need to recover that additional cost so basically the concept of marginal cost helps in pricing and production decisions suppose a factory रे आपनकर 1000 toys production होउची युज पे कि 5 लाख टका खर्च होउची यदि आपण 1001 यूनिट टॉय प्रोड्यूस करूछंती आपण खर्च 5 लाख रु बढ़ी कि 5 लाख 1000 हो ताले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा टॉय इज 1000 एतो गला आपनकर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू रु क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वर्तमान आसिया आउ कोन सब टाइप ऑफ कॉस्ट होई so apart from these there are various other types of cost जहां हम पढ़िले ता भितर इच मध्ये किछटा सिमिलरिटी आसी तो सही कैटेगरी भितर हम फर्स्ट कैटेगरी नोचे एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट मींस एक्सक्लूसिवली तो एक्सप्लिसिटली जो खर्चटा हम करिचे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कॉल so actual money spent by a business on expenses visible and recorded in accounting books जदि गोटे बेकरी को हम नौचे थी कंसीडरेशन को तार रॉ मटेरियल से किसी पैसा खर्च करूची वर्कर जो माने काम करछन तांकू सैलरी हिसाब रे जहा दउची इलेक्ट्रिसिटी रे किसी खर्च करू एमजे कि तार 80000 सपोज खर्च होला तो एत कहूछ तार एक्सप्लिसिट कॉस्ट व्हिच द बेकरी हैज एक्सप्लिसिटली bought to produce your you can say that breads or cakes like that. So explicit cost is nothing but the cost which has explicitly been spent by the business concern. Second part is implicit cost. जो हमें inputted cost पढ़िले आ पूर्वरु एटा similar to that. एटा को हम कहूचे hidden cost or opportunity cost. एटा केतबेले आसीबो ना जेतबेले हमें हमरो ओन रिसोर्स को यूज करूचे फॉर आवर पर्पस जेटा कहली जे ओनर acting as the manager of the company और आपण निजर घर अछि आपण कोनोसी रेंटेड हाउस न नै कि निज घरे आपण कंपनी रो ऑफिस स्टार्ट करले किबा फैक्ट्री स्टार्ट करले तो निजे निजे घर को आपण रेंट दउ ना किंतु अन्य कोठी निजे रेंट दे छन तो सेटा हिडन कॉस्ट बितर आपण आसी so implicit cost is nothing but the cost which is hidden or the opportunity cost of using own resources instead of renting them out. So accounting books way nine. Why give nine? Accounting book रे कारण एटा hidden rules. Hello. 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 Audible हो तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Subhu sir आज्ञा. तो अकाउंटिंग बुक रे एटा काहे की रिफ्लेक्ट होइनी कारण हम कहूचे जे एटा हिडन कॉस्ट जेहेतु हिडन कॉस्ट तेनु बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे आपन कोनोसी प्रोविजन सो किंतु एटा डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे काहे कि ना जेतले हम डिसीजन नबा वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट जोटा हम कहले जे जो खर्चटा हम करि पारि थांते किंतु एक्चुअली करिनी सेटा जदि हम कंसीडरेशन न नबा तले हम रियल प्रॉफिट ता कोन जानि परिबा नै फॉर दैट रीजन आपनकर इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नीडेड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग जदि आप रियल प्रॉफिट जानिया को चाहौ suppose a person owns a shop and runs a bakery there if they rented it out instead they would earn 30000 per month जो 30000 पर मंथ से पाई थांते जदि अलगा का को रेंट कर दै थांते सेटा को सोने सैक्रिफाइस करछन सेटा स्पेंड हे पर थांता किंतु खर्च हो ना therefore this 30000 rupees is the implicit cost and implicit cost is having its influence
on the business decision making process, because ଯେତେବେଳେ ବି business ରେ ଆମେ decision ନବା related to cost, we need to take into consideration this implicit cost. Then ଆସିଲା monetary cost. Monetary cost କୁ ଆମେ normally କହୁ nominal cost ବୋଲି. It is the actual amount of money spent on production. खाली production, explicit cost रे आपण कहले जे explicit cost रे आथिला, କିନ୍ତୁ explicit cost रे production बाद ମଧ୍ୟ ଆମେ other thing को consideration को नैते. कौन other thing को नेले ना, suppose ଆମେ गोडाउन में जिनस आनि कि रखिले, production जहाँ कले, फाइनल प्रोडक्ट गुडा, तो गोडाउन रे रखिया पे गोटे गोडाउन भड़ा आगे नहीं परंती किंबा गोडाउन गोटे तयारी करि पर ता पे खर्च करछि. गोडाउन में जो रहिला डिपेंड करछि आपन नेचर प्रोडक्ट कोन, मे बी इलेक्ट्रिसिटी दरकार हेई पारे, केतोडे जगह दरकार भी न हेई पारे. जदि दरकार होउछि त इलेक्ट्रिसिटी आपन खर्च करले. गोडाउन जगिया पे सिक्योरिटी गार्ड गुटे रखले, ता पछरे किछि पैसा खर्च करले. तो सेगुडा सब आपनकर एक्सप्लिसिट कॉस्ट भितर आसी होछि. किंतु एठी मनी कॉस्ट जो कहउछि, नॉमिनल कॉस्ट जो कहउछि, एठी केवल हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसीडरेशन को नउछि. हमर प्रोडक्शन ने कोन खर्च होइछि, ता माने जो हमें टू इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन पढिथिलि, से लेबर और कैपिटल ने हमें कोन खर्च करछु, सेही टोटल खर्च तो नॉमिनल कॉस्ट बोली बा मॉनेटरी कॉस्ट बोली कहउ. तेनो एठी हमें एटा को कंसीडरेशन नउछु. एइथिपाई जे जदि जेतळे हमें प्रॉफिट काढिया को चाहू, ग्रॉस प्रॉफिट, we need to take into consideration the monetary cost. तापर आसिला आपन रियल कॉस्ट. ए रियल कॉस्ट ता मॉनेटरी टर्म्स रे एक्सप्रेस हेई परिबो नाही, जेतु वर्ड रियल रहिछि. तेनो आमे जे खाली पैसा खर्च करके प्रोडक्शन करछु, दैट इज नॉट ट्रू. ता पछरे हमर बहुत एफर्ट रहउछि, हमर बहुत सैक्रिफाइसेस रहउछि, बहुत पेन रहउछि, जोगुडा की मॉनेटरीली मेजर करी हबो नाही. तो फॉर दैट रीजन जदि आमे देखिबा जे सेही सब जिनिसर कोन होउछि, सपोज आपन को गोटे दिया गला असाइनमेंट जे प्रोडक्शन आपन 3 मास भितरे करी कि देबे. आपन देखुन 3 मास भितरे जदि मते कंप्लीट करे को छी असाइनमेंट किबा ए प्रोडक्शन टाकी, ए दिन को 12-14 घंटा भी कम परिश्रम करिया पड़ियो. आपन संगे रे जोन टीम रे थिबे सेमान मध्ये सेति परिश्रम करिया पड़ियो. तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे आपन वर्किंग आवर 8 आवर्स होछि. So for this purpose only you are trying to work 4 hours or 6 hours more per day. तो आपण सेठी कोन करले, आपनकर 6 घंटा सैक्रिफाइस करथुन, जोडा आपण फैमिली को दे पर थांते, आपण निज पॉइं दे पर थांते. तेनो जल्दी आपण 3 मास भितर कंप्लीट करछुंदे, आपण को मोटिवेट करिया पे कंपनी आपण को एक्स्ट्रा रिवार्ड किछि दउछि, ना इंसेंटिव आकार रे हो किबा मोटिवेशन आकार रे हो, जदि दउछि आपण टीम मेंबर्स को दउछि, ताले आपण जानिबे हां मु एतिकी समय अधिका खर्च करथिली मोर, and for that I was being paid somehow. ताले सेठी आपनकर सैटिस्फैक्शन बा आसीबो. तो जेतेबेले भी हमें कॉस्ट एनालिसिस करूछु एज ए बिजनेस पर्सन, we need to take into consideration the real cost also. जे खाली हमें पैसा खर्च करूछु जेतिकी सेठी यदि कंसीडरेशन को नै कि देखियो ताले हबनी. आ भितरे जो ह्यूमन एफर्ट रहउची, जो सैक्रिफाइसेस रहउची for the production of goods or services, those things are supposed to be taken. Suppose आपण माइनिंग वर्कर हिसाब रे काम करूछिंदी, ओटे माइनर जले काम करूची, से गोटे डेंजरस कंडीशन रे काम करूची, कारण से कोल माइन रे सपोज काम करूछिन, आपण कोल एक्सट्रैक्ट करिया को पड़िबो. तो केते बळे कोन हि जिवो, कारण आपनकर सेठी लाइफ प्रति डेंजर रहिछि. तो डेंजरस कंडीशन आपण काम करूछिंदी. So here the real cost includes his physical effort, risk to health and environmental damage. तो सेटा को आपण मध्ये कंसीडरेशन को नवा को पड़िबो जेतले आपण डिसीजन नउछ. तापर आसेला अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट कोने कोन ना, बेसिकली इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑन दोज आइटम्स फॉर व्हिच देयर इज ए प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे जो आइटम पई आपनकर प्रोविजन रहिछि, सेही आइटम रे जदि आपण पैसा खर्च करछिंदी, ताले दोज expenses together can form the accounting cost. Suppose आपण 10 लाख टका रॉ मटेरियल ले खर्च करछिंदी, सैलरी रॉ मटेरियल सैलरी रेंट और इलेक्ट्रिसिटी रे खर्च करछि. ए सबुति पे आपनकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे प्रोविजन रहिछि.
suppose आपण manufacturing sector ରେ ଅଛନ୍ତି तो ସେଠି books of accounts ରେ ଆପଣଙ୍କର provision ରହିଛି raw material expenses ପାଇଁ provision ରହିଛି salary to the employees particularly administrative employees ମାନେ fixed salary ରହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ provision ରହିଛି rent ପାଇଁ provision ରହିଛି overhead ଭିତରେ electricity ପାଇଁ provision ରହିଛି तो ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ଆସିବ ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଦିସ୍ 10 lakh rupees on those items for which there is a provision in the books of accounts ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଫିଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟକୁ କନସିଡରେସନ କୁ ନଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେବଳ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ କଷ୍ଟକୁ କନସିଡରେସନ କୁ ନଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ବୁକ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଏଠି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ କଷ୍ଟ କୁ ନଉନାହାନ୍ତି ତ ନର୍ମାଲି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଫିଟ ସେମାନେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଶୋଇଂ ଦ ରିଅଲ ପ୍ରଫିଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର own purpose ପାଇଁ they need to find out what is the real profit they are generating for which along with accounting cost they need to take into consideration another cost which is your economic cost इकोनॉमिक कॉस्ट रे आमे बेसिकली सबु खर्च गुडा को नौ जो खर्च एक्चुअली हेइछि आ जो खर्च हेइ पारे थांता किंतु पॉकेट रु जाइनि ताने बोथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपको आमे कंसीडरेशन को नौछु in finding out the economic cost so on the part of every business concern they need to find out the economic profit rather than the accounting profit जोटा पब्लिक को देखा जाए सेटा एक्चुअली अकाउंटिंग प्रॉफिट देखा जाए नहले पब्लिक रो भरोसा रहइबनी इकोनॉमिक प्रॉफिट जोटा हम कहउछे सेटा होय आपनकर रियल प्रॉफिट कारण सेठी आपण along with explicit cost which involves all the expenses which you had actually borne you also take into consideration the implicit cost हम कहले basically those costs which could have been spent but actually have not been spent जोटा खर्च हेइ परि थांता किंतु एक्चुअली खर्च हेइनी तो सेटा को मध्ये हमें कंसीडरेशन को नबा फॉर फाइंडिंग आउट द रियल प्रॉफिट तो अकाउंटिंग कॉस्ट जाए फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस जोटी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जानिया पे हम केवल अकाउंटिंग कॉस्ट को कंसीडरेशन को नौ किंतु रियल सेंस रे as a business concern we need to find out the economic profit for which we need to take into consideration the economic cost एठी भी एग्जांपल हम देखैले पूर्व एग्जांपल जो 10 लाख टका कथा कहथिले जोटा कि सबुतरे खर्च करछन्ती सेटा तांगर अकाउंटिंग कॉस्ट थिला किंतु एठी हम सपोज कहउछि जे ओनर जीएस से मैनेजर हिसाब रे काम करूछि से तार जो स्किल अछि से स्किल यदि से आउ को जगह रे यूज करथांता मे बी he could have got 2 lakh rupees a month तो जेहेतु निज कंपनी से सेटा को स्पेंड करूची से स्किल टाको यूज करूची so he is not taking managerial remuneration or managerial salary from himself but से 2 लाख टका खर्च हेइ परि थांता तो सेटा से बंचेला कारण तापर सेटी स्किल अछि किन जेतले से प्रॉफिट कैलकुलेशन करिवो 2 लाख टका तो मध्ये कंसीडरेशन को नबो ताहले से तार रियल प्रॉफिट जान के तापर अछि सोशल कॉस्ट तो बिजनेस एक्टिविटी जोगु कोन खर्च सोसाइटी कोन खर्च करूची हम समस्त सोसाइटी रे रहउची बिजनेस मध्ये ऑपरेट करूची विद इन द सोसाइटी सो फॉर बिजनेस एक्टिविटीज व्हाट कॉस्ट द सोसाइटी इज बियरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट द सोशल कॉस्ट एटा बेसिकली सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे हम कॉस्ट ऑफ कंसीडरेशन को नौ और कोनोसी कमर्शियल एंगल नाही कारण we know that as responsible corporate citizens it is the responsibility of each and every company that need to contribute positively to the society ताले से जगह they need to be checked that is the reason why we are more concerned about this social cost nowadays so it is basically the cost which the company bear or which the society bears due to the business activities a two type of cost of cost in the form of pollution cost in the form of traffic jam cost in the form of health issues etc suppose ओटे chemical factory अछि जे रिलीज करछि स्मोक
जोटा कि एयर पोल्यूशन कॉज करूची एयर पोल्यूशन हवा द्वारा जेहेतु केमिकल गुड़ा बाहर को आସୁची हेल्थ प्रॉब्लम मध्य नियर बाय रेसिडेंट्स मनकर होउची तो एठी सोशल कॉस्ट कोन इंक्लूड करूची ना इंक्रीज हेल्थ केयर एक्सपेंसेस एंड एनवायरमेंटल डैमेज तो एटा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे सोशल कॉस्ट रे इंटरेस्ट होउची एते क्वेश्चन रो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमें जानिले ओवरऑल अपन मन रखियो जे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भितरे हमें सेग्रीगेट करूची जहां जहां कॉस्ट भी हमें पढिले ई सब कॉस्ट को हमें ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भितरे डिवाइड करूचे जोठी हमें कहूचे गोटे बिजनेस रे जहां भी खर्च होउची टोटल कॉस्ट जहां होउची टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट हमें जानिले जे is independent of output जहां भी आउटपुट लेवल रहू से कॉस्ट सेम रहिबो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें कहले इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट जदि आउटपुट बढ़ुची वेरिएबल कॉस्ट बढ़िबो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जदि आउटपुट कमुची त टोटल वेरिएबल कॉस्ट कमिबो ए टोटल कॉस्ट संगे आउ दुटा कांसेप्ट मध्ये हम आसी कारण हम मार्केट एनालिसिस करबा ए कॉस्ट कांसेप्ट को मध्ये कंसीडरेशन नबा जेमते हमें पढिले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रे the variable factor जदि हम यूज करूचे गोटे तार एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट हम लिखथिले एथि मध्ये हमको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कांसेप्ट जानिया पड़ी कारण मार्केट एनालिसिस रे एटा इंपोर्टेंट सो जेतले हम कॉस्ट एनालिसिस करूचे we need to be familiar about these three concepts of total cost average cost and marginal cost so total cost हम कहले is the summation of total fixed cost and total variable cost average cost हम कोन ना what is the cost per unit of output तामने टोटल खर्च केते हेची और टोटल आउटपुट केते प्रोड्यूस हेची तार जदि रेशियो हमें नउचे ताले हम एवरेज कॉस्ट पाए सो इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हिच कैन बी फाउंड एज द रेशियो बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल आउटपुट टीसी इज टोटल कॉस्ट क्यू इज टोटल आउटपुट एथि मध्ये एवरेज कॉस्ट को हम देखौजे एज ए समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जेमते एवरेज जेमते टोटल कॉस्ट को देखेले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एठी एवरेज कॉस्ट को मध्ये हम देखौछि एज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट जति कथा देखिबा मार्जिनल कांसेप्ट हम कहथिली बेसिकली रेफर टू द एडिशनल कांसेप्ट तो जेतबे भी किछि हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करथे तबे केते एक्स्ट्रा खर्च करूछि दैट कॉन्स्टिट्यूट द मार्जिनल कॉस्ट सो इट इज बेसिकली referring to the ratio between the change in total cost due to a unit change in the total output. जदि टोटल आउटपुट रे गोटे यूनिट चेंज होची ता फल रे आपनकर टोटल कॉस्ट रे केते चेंज होची सेटा आपन मार्जिनल कॉस्ट हिसाब से ई तीनटा कांसेप्ट इंपोर्टेंट कारण आपन नेई के मार्केट एनालिसिस ता करिबो हैला तो एती थाउ আজি कॉस्ट एनालिसिस भितरे एती केवल बुझिबे कॉस्ट कांसेप्ट कोन जानिले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जानिले ता भितर कोडा रेलेवेंट कोडा इरेलेवेंट जानिले कारण सेटा न जानले आप कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन नै परिबे ना तो नेक्स्ट क्लास रे विल गो ऑन टू डिस्कस अबाउट द मार्केट एनालिसिस इन एन ऑर्डर ठीक अछि सर वन क्वेश्चन हां कोन सोशल कॉस्ट अकाउंटेबल ना आगे सोशल कॉस्ट अकाउंटेबल ना हाँ अकाउंट नेबिना आपण सेति में कहली एज रिस्पांसिबल सिटीजन एवरी कॉर्पोरेट एवरी कंपनी हैज सम सोशल रिस्पांसिबिलिटी जदि आपनकर ऑपरेशन जगु सोसाइटी किछि एडवर्सली अफेक्टेड होछि जोटा कर कॉस्ट रे रिफ्लेक्टेड होछि जोटा हम कहले आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो आइदर इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन हो होला आइदर इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स हो एडा होछि सोसाइटी बियर करछि काहे बियर करछि ना बिकॉज़ ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी एगुडा को आपण मॉनिटरीली मेजर कर परिबेनी तेनु ताकू रोकिया में आपण कोन करछि नेट एक्सपेंडिचर टू चेक दैट आगे एक्सपेंडिचर रे काउंट करियो एक्सपेंडिचर जे एटा मॉनिटरी टर्म रे नाही ना सेट में कहली केवल सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमको सोशल कॉस्ट कंसीडरेशन नवा पड़ुछि आपण प्रॉफिट देखिया पहले एटा किसी कंसीडरेशन नवा पड़िबो आपण यदि जानिया को चाहछन जे कंपनी हिसाब रे आपण सोसाइटी की कोन कंट्रीब्यूट करूछंती तले से जगह आपण देखिबे जे बिकॉज़ ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी व्हाट कॉस्ट द सोसाइटी इज बियरिंग सेकंड देखिबे
what benefit you are providing to the society against that. ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ବେନିଫିଟ ଟା ଅଧିକା ରହିବ କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଆମେ ନଉ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟ ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କଣ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, କାରଣ ସେଟା ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ମେଜର୍ସ ନେବେ ଟୁ ରିମୁଭ ଦ୍ୟାଟ ଅର୍ ଟୁ ନ୍ୟାରୋ ଡାଉନ ଦ୍ୟାଟ। ଯୋଉଟା କହିଲି କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଏରିଆରେ ସେଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ନିୟର ବାଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, କାରଣ ଯୋଉ ସ୍ମୋକ ବାହାରିବ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟେଜ ବାହାରିବ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଟା ନିୟର ବାଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ତିଆରି ହଉଛି ନୂଆ ଇଏ ସେଇପଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ, ସେଇ ପାଖାପାଖି କିଛି ଜନବସତି ରଖିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖିକି ଦଉଛି। ତ ଯଦି ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ନଲେଜ ହିଁ ନଥିବ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ଆପଣ ବିଜନେସ କରିବେ, କରିପାରିବେନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ରହୁଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ କମର୍ସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟର କିଛି ରେଲିଭାନ୍ସ ନାହିଁ। सर मार्जिनल कॉस्ट ବୁଝିଲେ? Yes, sir. ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ ମାର୍ଜିନାଲ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡିସନାଲ କନସେପ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ଅଫ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଲାଟରାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ବିୟର କରିଛନ୍ତି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ରିକଭର ଦ୍ୟାଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଟା କେମିତି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାଇସିଂ ଡିସିସନ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେଇ ବେସିସରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଡିସିସନ ନେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଡିସିସନ ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ସିନା ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ରିକଭର କରିଦେବି। ମୋର ପ୍ରଫିଟ ପଛେ କିଛି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ରିକଭର କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଯଦି କଷ୍ଟ ରିକଭର ନ କରିବି ମୋ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। तो For सर that, तो डायरेक्टली marginal cost अफेक्टिंग टू द मार्जिनल रेवेन्यू। ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ପାଇବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା, ସୋ ଅଟୋମେଟିକାଲି अच्छा ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବିକ୍ରି ହବ। ବଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଡିସିସନଟା ନେଲା ପରେ ହିଁ ବିକିବେ ନା, ବିକିଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ନା। ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ କରିବ, ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ତାର ନା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ବେସିସରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଡିସିସନ ନେବେ। ସପୋଜ ଆପଣ 100 ୟୁନିଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 101 ୟୁନିଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା 1025 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଡିସିସନଟା ନେବେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ନେବେ ଯୋଉଠିକି ମିନିମମ୍ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିକଭର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଆମେ କହିବା ଯେ 25 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରାଇସିଂ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସିଂଟା ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବହୁତ ଗୁଡା ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଯାହା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଆମର। ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଅପରେଟ କରୁଛେ, ସେଠି କନଜ୍ୟୁମରର ପରଚେଜିଂ କାପାସିଟି କଣ ରହିଛି, ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରାଇସିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଇସିଂଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେସବୁ ଗୁଡାକ କନସିଡରେସନ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି which is less than 25 rupees, that means you are at a loss। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଯେମିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି 25 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିକଭର କରିପାରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆପଣ ପାଇଲେ by selling that extra 101 unit of output, ତାହେଲେ ସେଇ ରେଭିନ୍ୟୁଟା is more than the marginal cost, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେତିକି ମୁଁ ରିକଭର କରିଦିଏ, ତାମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଦିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତିକିରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନୋ ଲସ୍ ନୋ ଗେନ୍ ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ବି ହିଡିନ୍ କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ କିଛି ଅଛି ଆପଣ କିଛିଟା ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଜିରୋ ପ୍ରଫିଟ ବୋଲି କହୁ, କିମ୍ବା ବେସିକାଲି ଆମେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ ବୋଲି କହୁ। এটা ମୁଁ ପଢେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍, ବୁଝିଲା? यस। ହଁ।
आज ये थाओ मु नेक्स्ट क्लास में मार्केट रिसीव करूँ थैंक यू ऑल Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. गुड नाइट